أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है इंजीर की और जैतून की और तोरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर मक्का की। यकीनन हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर हमने उसको लौटाकर बस्तियों में सबसे नीचे कर दिया। मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। बस इसके बाद कौन सी चीज़ तुझे जज़ा के बारे में जुटलाने पर आमादा करती है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। The chief guest of today's occasion. He is a fellow of College of Physicians and Surgeons. He is a graduate of King Edward Medical College. He also did his MSc in Dermatology from University of Glasgow and a diploma in Dermatology from Bangkok. He has served as head of the department at various dermatology departments including Punjab Medical College, Services Institute of Medical Sciences, and presently is working as head of the department Shalimar Hospital, Lahore. He is a member of Pakistan Association of Dermatologists, member of SARAD, and also a member of Pakistan Medical Association. He received Lifetime Achievement Award in 2017 for his immense services in the field of dermatology. I welcome none other than Dr. Azam Bukhari. Sir, please. Our next chief guest is also a person who needs no introduction. A graduate of Army Medical College, a fellow of College of Physicians and Surgeons. He did advanced job on training job in clinical dermatology at University College Hospital, London and Manchester and Royal Infirmary during 1986 and 97. He has served as professor and supervisor in dermatology at Army Medical College and Military Hospital, Rawalpindi for almost 2 decades. He was a Dean of Faculty of Dermatology at College of Physicians and Surgeons from 2013 to 2018 and has the honor of being elected twice as a president of Pakistan Association of Dermatologists. He was awarded Hilal-e-Imtiaz Military in 2019 in recognition of his meritorious services in the field of healthcare. I welcome General Zafar Iqbal Sheikh. Sir, please grace the stage. The next person is not a riddle to guess. He's the person behind all this.
He is a graduate of Punjab Medical College, fellow of CPSP, and he has served in various capacities at Services Hospital, Lahore, Punjab Medical College, Faisalabad, and Children's Hospital, Faisalabad. He is a supervisor and examiner of College of Physicians and Surgeons. Pakistan Association of Dermatologists has not seen a general secretary like him. The most vibrant personality in the present PAT cabinet, I welcome Dr. Shahid Sheikh. Sir, please. The next personality who will grace the stage now is a graduate of Fatma Jinnah Medical College. She did her post-graduation from College of Physicians and Surgeons, served in various capacities at Punjab Medical College, Faisalabad, Services Institute of Medicine Sciences, King Edward Medical University, Gujranwala Medical College, and is presently serving as head of the department at Amiruddin Medical College, Lahore General Hospital, Lahore. She's a supervisor, examiner of CPSP and has keen interest in the field of medical editing and reviewing. She's a reviewer of various medical journals, which include Annals of KEMU, Pakistan Postgraduate Medical Journal, and Medical Journal of CMH Lahore. I welcome on stage our head of the department, Professor Anila Asghar. Madam, please. As you all have gone through the program, our first speaker, which was planned for today, was Dr. Uzma Ali, but she has been unable to attend today's workshop due to some personal reasons. So I apologize on her behalf, and we will commence our proceedings forward. Our first speaker, which all of you very well know, is Dr. Shahid Sheikh, our worthy General Secretary PAT. So please, I welcome you for your lecture. I'm so sorry, there's a bit change, I missed it. I welcome Dr. Anila, Professor Anila Asghar for your formal welcome address. Madam, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं लेक्चर या वेलकम वैसे भी कह सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं लिख कर लाई हूँ, तो इस वजह से मैं एक फॉर्मल तरीके से आपको वेलकम करूँगी। ठीक है? वर्दी चीफ गेस्ट प्रोफेसर आजम बुखारी, जनरल जफर इकबाल शेख, President PAT could not be with us today, General Secretary Dr. Muhammad Shahid, and all my respectable dermatology colleagues. I extend a very, very warm welcome on behalf of the Pakistan Association of Dermatology and on behalf of the Dermatology Department, Lahore General Hospital, which is attached with PGMI, that is Postgraduate Institute Lahore, and Amiruddin Medical College. My team and we all PAT members, we worked very hard for the preparation of this workshop. The idea behind all this effort was to provide a free of cost, updated knowledge and skill about the recent emerging field of dermatology, that is the use of facial threads as an anti-aging treatment. A strong need was felt for the training sessions provided by the certified trainers to qualified doctors. So, as a lot of quackery is being practiced in this field of dermatology, I hope all of you will benefit from this training session to improve your knowledge and skill about the facial threads. In the end, I would like to thank our sponsors, the CEO of Pharma Health, Mr. Khwaja Shahzeb Akram, and the business head Brooks Pharma, Mr. Yasir Mubarak, for these efforts which make this event possible. And thank you very much, and I may call upon Dr. Shaika for further proceedings. So our next speaker, Dr. Shahid Sheikh, our worthy General Secretary PAT. I welcome you, sir, to share your knowledge with us. Bismillahirrahmanirrahim.
First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for this learning activity, which is free, and I am very honored to have my teachers, supervisors, आजम खानी साहब, and आप हैरान होंगे कि माशाल्लाह जनरल साहब जो हमारे साथ इधर जफर साहब हैं, वो मेरे माशाल्लाह फर्स्ट एग्जामिनर थे और उनका भी फर्स्ट एग्जाम था जो आए थे इधर लाहौर में CPSP में, और मेरा माशाल्लाह कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का केस था एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और मेरे सुपरवाइजर आजम खारी साहब ने मुझे इस तरह तैयार करके भेजा था। जब हमारी कहते हैं प्रिपरेशन हो रही थी तो खारी साहब ने एट द एंड लास्ट डे इस तरह से तैयारी करवाई कि एवरीथिंग वी हैव लाइक वाइट कोट, थर्मामीटर, इंची टेप, हैमर एटसेट्रा, एवरीथिंग, इवन ट्यूनिंग फोर्क, एवरीथिंग वी हैव इन आवर किट। और बुखारी साहब ने कहा शेख साहब आज तो आप छा गए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन अल्लाह पाक ने मुझे अल्लाह पाक की रहमत से मैं आज आपके पास हूँ और मैं खुश हूँ कि मेरे टीचर्स मेरे पास हैं। तो मैं बहुत मशहूर हूँ कि मेरी हौसला अफजाई के लिए भी आए और ये मैं बड़ी ऑनर महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको मक्का पाक और मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए, बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। Today the topic of my presentation is art and science of facial threads lifting. First of all, I will ask a simple question from anyone. What is facial lifting? Define facial lifting, anyone. Why we lift the face? Because there is a process of aging. In aging, certain changes occur from skin to downwards, like skin, soft tissues, bones, etc. They become degenerate with the passage of time, and the skin, soft tissues, they become loose, and there is sagging of the skin occurs in aging process. We call it dermatology. Now we will change this process with threads. Then we call it facial lifting with threads. असल आर्ट और साइंस तो अल्लाह पाक की है ना, एज तो उतनी रहती है ना, एज में चेंज नहीं है, but we look, everyone want to look younger, so it's a change to look like a younger, but age is the same. The objective of this learning activity is
the fixing technique, why fixing technique is important in facial lifting. If we learn about the fixing technique, then you have understand the lifting of the face. Then you will learn about the facial anatomy, then pinch anatomy, and then understanding of the threads. Then techniques, basic technique, various types of threads, and the techniques for different areas, and then ultimately at the end, outcome and side effects and treatment. This is basically the objective. Inshallah, I will try my best to learn these objectives in a very simple way. This is art of a human. This is not art of Allah. Allah has made us. Allah has given all the things, eyes, eyebrows, even nails, everything, every cell has given to us free of cost. But these techniques, this art, this science, we pay to make and as an anti-aging process with threads. So, for this purpose, if we draw 3 lines, vertical lines, horizontal lines, and oblique line. Vertical line starts from the outer canthus of the eye, and horizontal from the same point towards the ear, and the oblique line from the outer commissure to the lobule of pinna, oblique line. These 3 lines divide the face into 2 parts, the medial part and lateral part. The medial part is a fixed part which is not mobile, and the lateral part is movable. If we talk, if we speak, if there is movement of the face, the lateral part is movable part and the medial part is not movable. And sagging, aging, loosening of tissue always occur inframedially towards the nose. And then for this purpose, to remove the loosening part, to remove the sag part, to lift that part, we pull the skin supralaterally. So this is very important to understand these lines. There are 3 important terminologies. What is fixing point, what is direction, and what is hanging point. This is fixing point and direction and hanging point. You can see the pulling which we did with the threads. The direction is supralaterally, and direction is the lines or the markings, we call it vector. The force which we apply for pulling towards the fixed point is called pulling force towards the fixing point. So fixing point is very important in lifting of the face. And the third point is hanging point. Hanging point is inside the body, inside the face, inside the tissue. And there is a point distant to the hanging point. That point, that area is very important.
When we apply the pull superolaterally in the direction of fixing point, actually we are pulling the hanging point and area distal to the hanging point. This is the part below the hanging point. Actually, it is pulled. So, fixing point, direction, and hanging point should be in one line. If we pass multiple threads in one hole or 1 centimeter apart, multiple holes, we are passing multiple threads, we have a maximum pulling force. Then we will pull maximum part of the skin of soft tissue, which is sad due to aging. For the fixing point, if it is strong, if it is stabilized, then pulling is very effective. Then the desired results are very impressive and the patient becomes happy with the procedure. For this purpose, we choose either the superficial temporal fascia, either the deep temporal fascia, either we make multiple entry points. If we make multiple entry points or pass multiple threads in one hole, then we have a good hanging point. Mean either you choose the superficial temporal fascia for fixing point or entry point of the needle or cannula, or use one hole but use multiple threads, or use multiple holes passing one thread in different directions. Then you have a good strengthening effect, good tightening effect, good lifting effect. So this is very important to make the fixing point, which should be a firm point. Now the understanding about the facial anatomy. There are only 4 procedures which we perform. You have 4 volumes of loop, having 4 words, 4,339 words, pages of the loop. And the most important procedures used in dermatology, they are 4, having different target tissues. For threads, always we use subcutaneous tissue, which lie below the skin. And bulldogs is meant for the muscles, to inhibit acetyl pulling, to relax the muscles. And the meso for the dermis. We use different cocktails in the dermis. And the fillers deep when there is more aging, more sinking. Then we call sinking, not sagging. We inject the filler deep so that they not drop below. If we will inject the filler in the superficial layer, they will drop below and forming the nodule. It should be below, deep, close to the periosteum. These are the 4 procedures and 4 target tissues in dermatology. Having a worth of, I think so, in lakhs. There are 5 layers of face. First skin, then subcutaneous layer, then base, where is facial muscle and superficial musculo-epidermoid system. This layer is very important
all vital structures like blood vessels, nerves, carotid duct, even vein, lie below the smash. So the anatomy of the face, for lifting of the face is very important. Then the retaining ligament and the bone, periosteum and the bone. Sorry for hindrance. This is this is sagittal section or coronal section. Anyone? Two sections, coronal and sagittal. This is sagittal section. Now the thickness of the face. This is also very important. Anyone tell me where is the thinnest part of the face? Upper eyelid, 0.38 mm. And the thickest part? Tip of the nose, 1.25 mm. 1.25 mm is the thickest part of the skin. Good, shabash. This is our target tissue. These are the compartments of the subcutaneous tissue. The forehead compartment, periorbital compartment, cheek fat, nasolabial fat, and jaw fat, superior, middle, inferior, and mandibular fat. This is our target tissue, where we will, inshallah, insert the threads. And how to achieve this target tissue, inshallah, during hands-on, our team, inshallah, try our best to, inshallah, elaborate how to reach this area. This is mass, superficial musculoaponeuric system. You can see the genital device. You can see the frontalis muscle is a continuation of the superficial musculoaponeuric system. Above and below is the platysma. And this is the temporal. The other is the temporoparietal fascia upward. You can see the vital structure lying below the smash. Above is the front, is the continuation above with the muscle frontalis, and below is the platysma. And above the pinna is the temporoparietal fascia. And below the smash, the vital structures, blood vessels and nerves, they are lying below the smash. This is the deep fat compartment. This is the soup and roof, retroorbicular circular fat and the suborbicular circular fat and the cheek fat and the deep buccal fat. These are the retaining ligaments. Sometimes we have to make the fixing point, entry point in the ligaments. When there is more sagging, we want anti-aging results, we have to make the entry point in the ligaments. These are the different types of ligaments. This tree is very important. You can see the dermis and subcutaneous tissue lying above the smash, and below is the muscles, bones, and periosteum, etc., and the retaining ligaments. This slide is very important because it really gives oxygen. When you perform the procedures, you should remain relaxed. You should know everything. If there is resistance during the procedure, there is no need to become a sweat. There is no need of
relieving your confidence. You know everything. You remain stable during the procedures. Sometimes there is resistance. You will go through movement to pass the threads in the plane, in the subcutaneous fat, in the subcutaneous tissue. So there is no need of worry during the procedure. These are the vital structures, branches, which we kept in mind during the procedure. The blood vessel, 3 vessels, superficial temporal artery, zygomatic orbital artery, transverse facial artery, middle temporal vein, and nerves 5, temporal, zygomatic, maxillary, mandibular, anterior, cervical, and the parotid. These structures, these vital structures, you have to avoid during the procedure. So, superficial temporal artery is very important to prevent it from pricking by the needle or with the cannula. Cannula is safe to prick that vital organ, vital blood vessels. Always remember one finger method from the tragus. If you want to apply the index finger 1 centimeter here, and the anterior, you can palpate your superficial temporal artery. If you palpate, if you have the pulsations, it means you save the superficial temporal artery. And this superficial temporal artery runs along the hairline and runs supromedially, about 16 millimeter lateral to the outer border of the eyebrows and 15 millimeter above the eyebrows. And there is frontal artery. When we pull the eyebrows, we kept in mind the frontal branch of the superficial temporal artery. So, 3 branches, zygomaticofacial running towards the outer canthus of the eye, and the transverse facial artery running obliquely towards the outer commissure of the mouth. If you pass the threads, you have to pass these 3 branches. And I will tell you how to avoid these blood vessels during the procedure. This is very important to understand the one finger method. One finger method from the tragus and one finger method from the outer canthus of the eye, and one finger method from the eyebrows. This below picture, see the below picture, there is skin, subcutaneous tissue, and the red is superficial temporal artery, and the yellow is the temporal branch of the facial nerve. I will tell you the pinch anatomy. These structures remains below the pinch anatomy. So you are very safe during the procedure. This is the temporal branch of the facial nerve. Otherwise 5 branches, but the temporal branch is very important. If it becomes damaged, there is drooping of the eyebrows and sagging of the eyelid. You can see it starts from the tragus, about 0.5 centimeters below, and then runs supralaterally along the hairline, close to the outer border of the eyebrows. This is the temporal branch. You can see there are multiple branches. So if one branch prick, there is no need, there is some numbness, some anesthesia there, but it will relieve with the passage of time. But we will avoid this structure during the procedure. So I saying again and again, no need to worry during the procedure. If it is big, if you make the entry point or fixing point, you can see
the drooping of the upper eyelid. This is the course of the carotid duct. If we make a line from tragus to the outer curvature and divide the line into 1/3 and 2/3, 1/3 laterally and 2/3 medially, and make a curve 1.4 centimeter above, it is a course, it is a surface anatomy of the carotid duct, which is also lies below the facial nerve. So you can see for this purpose, to achieve the lifting of the face, we have to make the markings, we have to make the design, we have to draw the vectors, we have to perform a test. The test is, we call it simulation test. We apply 3 fingers and lift the area between the eye and the ear upwards superolaterally and show the results to the patients bilaterally symmetrically, like this. This is the simulation test. This is the result you will achieve. You will discuss with the patient, take the consent, and everything should be explained to the patients. All is written on the consent form. If the patient, my opinion is, if the patient asks more than 10 questions, then understand he is not satisfied or he is not, जैसे कहते हैं वहमी है बहुत ज़्यादा, confused है, question more than 10 हो गए हैं, then don't select that patient. So selection of patient is very important. If she or he asks more than 10 questions, because you have performed a procedure in the other way, you have to take the money, the procedure is costly, you don't take that patient because his or her expectations are very high. They want, they want, mean she or he want to become a 40 from 60 years of age. So its expectations are very high. Don't take that patients for the procedure. These are the vectors, one finger method along the hairline. You can easily pulsate the superficial temporal artery and one finger ahead you will make the opening. This is very important. When you make the opening in the temporal area, in the temple area, then the vector should be, the juice of the thread should be long, and it should be more in the inframedial. If you choose the site in the temple area, you should go inframedially with long threads. If you choose medial fixing point close to the eye, then choose the smaller threads to make the meshwork. With the mono screw or spiral or twisted threads, you choose the smaller threads. To make the meshwork is also very important in fixing point, which is stable, which is cause more lifting of the face. So meshwork is also like the pores, like the superficial temporal fascia, like the ligaments. When you make the openings, so one is also important to make the meshwork. One is also important when you choose the thread, which is bidirectional. The corbs are in two directions. Then gathering of the tissue occurs in the middle of the thread. This is also very important.
when gathering occurs in the middle of the threads, you are doing two things. One is enhancing the volume, and other is tightening the skin, and third is regeneration. And these threads are long-lasting. These are the silhouettes of threads having bi-directional threads. I will go through today in the latest slide. This is a jawline lift. This area is very important from nose to oral commission. When you make the vector between the nose and the oral commission, you are lifting the nasolabial fold. When you make the vectors below the oral commission, you are lifting the jawline, or you are correcting the marionette lines. So these two areas are very important, from the ella of nasai to commission for nasolabial, and from the commission to the lower border of the jaw, or to the chin. This area correct the marionette lines, and if you go towards the pinna, then you will lift the jaw line. So this area is very important. These three areas, we call it hanging points. This is the cheek lift. These are basically the vectors. When we start the procedures, first of all, we design, we draw the vectors, we draw the markings, so that it will become easy to pass the threads and we get the desired results. This is correction of the marionette lines below the commission. This is the brows lift. Here, always press the fingers in the eyebrows. From lateral to medial or medial to lateral, you will feel the notch. We call it supraorbital notch. This area where the supratrochlear and supraorbital nerve pass, leaving this area and then pass the threads in an oblique direction. And two threads will pass below the inferior eyebrow. Then nowadays we call it fox eyes or almond eyes. Then you will make the almond eyes. Today the fashion is of making the fox lines. People are saying, make my fox eyes, pass 3 threads above the eyebrows and 2 threads below the lower eyelids. Inshallah, I will do during the hand roll. This is the neck lift, vectors for the neck lift. This is very important. Pinch anatomy. You will use the index and thumb, and every entry point, every fixing point, you pinch the skin on that area. And the vital structure always lie below the soft tissues which are pinched. Always remember, gently pinch the skin, and the subcutaneous tissue. Skin is 2 mm and subcutaneous tissue is 4 mm. In some needles, there is marking of 4 mm. You go vertically or obliquely 4 mm. When you go vertically in 4 mm, you reach your plane, and then you incline horizontally, obliquely to pass in the subcutaneous tissue. You will feel very smooth way. You will feel very soft, smooth way to pass the threads. And the cords, barbs, thorns hanging with the threads, they anchor, they rise the fat tissue, and the tissue becomes anchored in that barbs. And you will pull that. This is for the temple area. If you draw 2 lines, one line
from the lateral eyebrows and one line from the outer canthus horizontally in between. In between you make the entry point. This is in the subzygomatic area where is passing the transverse facial artery. Here is passing the zygomatic orbital artery. You pinch here in the zygomatic bone and you prevent the zygomatic orbicularis artery. This is the subzygomatic area. You are also preventing the other branches of the facial nerve as well as the parotid. This is the pinch anatomy. This is very important to pass the threads along the pinch anatomy in the tissue which is pinched, not deep, not pinching hard, so that the vital structures remains below. This is about the anatomy and facial anatomy and vectors, and this is the last portion about the threads. The threads are monothreads. Initially it was used monothreads and cob threads. Unidirectional, bidirectional, having multiple characteristics and features like closing the open pores, correcting the texture, tone of the tissue, even the fine lines, deep wrinkles, depending upon the selection of the threads. Some threads are cutting and some are molding. Usually cutting threads, they break during the procedure. Molding threads, they are very strong threads. They have strong coils. They have multiple coils. If they have multiple coils and they are molding, they have the strong stabilizing effect. It means 6-7 points which are very important to lift the face. There should be deep temporal fascia, there are multiple holes, there should be multiple coils on the threads, the coils should be molding. These are points you make the lifting very effective and the patient becomes very happy from this procedure if you select these points. These are simple type threads just to clear the open pores, and these are the path threads, thorn, we call it thorns, calls, these are unidirectional threads. This is for the beginners. This is unidirectional but bidirectional. Some are zigzag pattern in two ways. These are the molding threads, these are the cutting threads. Molding threads are very effective, stable, they are long. The long threads having the more lifting effect. Some threads are having the needle, some cannula, some like needle, some like cannula. All depends upon the techniques, and the man becomes perfect. The word perfect is used. Actually, experience makes man perfect. You will use the threads, you will use multiple techniques, multiple teachers. You have multiple techniques. Ultimately, you have a lot of confidence to pass the threads. Cutting thread usually sometimes there is disinsertion you insert, but the threads comes out due to contraction, due to tensile strength of the tissue, but sometimes contraction of the muscles, sometimes the threads fold up and there is sometimes breakage of the threads. The duration of the PTO threads and PLA, the duration about 6 months for the PTO threads, and this is for the beginners, and the PLA, polylactic acid, about 2 years, and PCL is about 24 months in 2 years. One thing is important, the threads, they are inert. They are bioabsorbable. They are biodegradable in the tissues. There is hydrolysis of the threads. They don't make any foreign body granuloma. There is process, we call it hydrolytic resolution, hydrolysis of the threads. They change into water, into gas. So there is no need of worry to become, if the thread becomes fold, if there is any complication, you compress that area
give the multiple visit to the patients, and you can ask from the seniors what procedure I can perform to relieve the side effect. There is no need to worry. These are the multiple tests, mono tests, spiral tests, tornado tests, sometimes gold tests. With the passage of time, like the first generation, second generation, third generation, and ultimately there are fourth generation, which are bidirectional, which are having the cones and nodes. The scissors of test, this is having the cones and nodes. The cones are the nodes. Nodes lying between about 0.5 centimeter and the cones about 8 centimeter. You can see the needle size is 12 centimeter and the needle 23 gauge, and 0.5 centimeter length for the 8 cone and 0.8 for 12 and 16 cone sutures. There are two needles, we call it two arms, but one opening. You can pass in one line, you can make an angle. This is all depends upon you, how you want, how much skin is sad, how is aging, intensity of the aging is occurs. If the jaw is doing, we can do sometimes multiple procedures. We can also use filler tops as well, along with the filler and other threads. The filler sock is very important to produce the volume as well, like the fillers and the collagen production and the lifting of the face. So this all depends upon you which thread you choose. And the anesthesia, when we do the hands-on, then we will use the needle and the all for the anesthesia purpose. You can apply the anesthesia on the skin in multiple sites, but when you apply on the skin in multiple sites, there is chances of bruising. When you pass the anesthetic material, lidocaine, through the cannula, there is less chances of bruising. This is through the cannula. Always try to pass the anesthetic material through the cannula along the vector line. This is the histological features after passing the threads. There is fibrous tissue formation, and the old fibrous tissue they merge, and myofibroblasts they contract, new blood vessels formation, and ultimately fat cell decapitation and producing the contouring of the face as well. This is a linear technique, this is the mesh technique. Mesh technique is very important. Linear technique you will use for the long threads. This is the linear techniques and you will using the small threads. These are safe threads. When you pass multiple threads, you having the good strength, good tightening effect. This is the meshwork technique. Inshallah, we will pass the threads on the head, and we will also, if patient feel pain, so then we will block the ring supracochlear, supraorbital, auriculotemporal, and 1.5 centimeter lesser and greater occipital, and we will block that. And we do the procedure very comfortably on the head. These are the cob threads having the multiple directions. The pulling direction along the inclination of the cobs. When it is inclination, then it is a good method. When it is opposite, then there is this insertion like this one. The pulling should be along the inclination of the cobs. These are the angles. You can make the angles for more strengthening effect. When you want there is more sagging, more drooping, you want more strength, then you make the angles. Then you can use the two needles, like this. You can make the knot to prevent the disinsertion of the thread.
Basically, this is the facial anchoring method. You go downwards, obliquely or vertically, and then you will achieve the plane subcutaneous fat, which is very normally you can pass. Sometimes there is resistance due to formation of fibrotic tissue, due to trauma, due to any surgery on the face. Sometimes you feel resistance. When you feel resistance, you can pass the threads on the neighbor side. You don't need to worry, don't need to sweat at that side. You just pass out the needle and then pass on the other side. If you want nasolabial fold lifting, jaw lifting, marionette lifting, you can make 3 holes with pinch anatomy. You will pass 2 threads in one hole. You will pass 2 threads in another hole. You will pass 1 thread below the pinna to the chin. These are the forming the fixing point like this. This is the cylinder shop. You will have 2 arms. You can see the one needle is on the other side and the other from the one hole. From the one hole. And you will take the lifting effect in a sense of making a volume as well as tightening of the tissues. You can make a linear section. You can usually people use this technique, passing the thread from the pinna and then upwards and then downwards towards the chin. This is the U technique. This is the periorbital dance. This is bouquet thread, having 2 types of material, PDO as well as PCL. There are 7 threads, 1 needle, but there are 7 threads. 3 are for PDO and 3 are for PCL. PDO having 6 months duration and PCL having a duration of 2 years. So bouquet thread nowadays is very used in the periorbital area. Inshallah, I will perform the procedure during hands-on how to pass the bouquet threads in the intra-orbital area. These are the complications. This complication is the topic of, my colleague Lahore will elaborate about the complication and how to prevent. And dimpling, sometimes there is a dimpling. No need to worry about dimpling. Use the index finger. There are 2 index fingers. One is inside the oral cavity and one is outside, and you press the dimple and pull the thread outwards and the dimpling removed. Sometimes there is migration of thread. You pass thread here, but on the next day you feel here because there is more loosening of the tissue of the patient, and the patient may be one at home, speak more, the thread migrates. When we pass the threads, this is a general tool. When there are multiple cords, the cutting should be not just above the cord. You feel the cord, you feel the rough area, and cutting should be above that area. Then there is no migration. Usually, the area of dimpling is that area which is fixed, which is medial, which is where is more immobile area. The dimpling occurs here. You have to play lateral to this line. This is very important. Always play lateral to vertical lines and always do pinch anatomy to prevent the vital structures. Always play beginners with the meshwork technique. Always make the entry point, good vectors, good markings, then you will get the good results. This is one finger method from the outer canthus to prevent the vital organs. This is very important point. If there is pain, maybe some infection,
you have to then choose of antibiotic, rest, compression, weight, etc. Thank you very much for listening me patiently. Thank you very much. Sir, I request my respected teacher, Professor Harisa, General Dr. Saab, Ma'am Ranjina, whose person please come on the stage. I want to give one surprise gift to one person. Please come on the stage. Beta वो gift लेके आओ. जरूर सब आए, हम जैसा आए. आप तो भाई. From my side, these are my teachers, and I have honored. I have a surprise gift of one person sitting in the hall. I don't know. Maybe he or she don't know which is the prize, which is a surprise. If anybody knows, please hand up. बेटा वो शीट लेके आना शीट लेके आना शीट इसमें आपको आवाज आ जाएगी ये मेरा शीट है पीएडी की तरफ से जो पीएडी में माशाल्लाह इतनी एक्टिविटीज होती हैं क्लिनिकल केस होती हैं ट्रीटमेंट डिस्कशन होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एडवाइस एक ऐसी आई जो मुझे अच्छी लगी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने फिर बड़ी अच्छी अपनी तरफ से एक शीट बनाई जैसे कहते हैं ना कि दिल नू लागी करना या वो कहते हैं कि कबर च पहला सवाल कहना होना नमाज का है नमाज या जन्नत की कुंजी केड़ी है नमाज ते prayer area in during the session our female dermatologists see a problem during a workshop during the seminars they feel a problem to pray at that area. We make a prayer area here during the lunch time. The advice comes from the Dr. Nabila Chima. So Nabila Chima, please come on the stage and take a gift from my side. And my teachers will award you. And I am honored my teachers are here. This is a unique advice and I follow it. Thank you very much. The supervision of legendary Professor Tahir Saeed Harun sir. Any workshop or conference in dermatology, if it goes without the thought and the name of Professor Dr. Tahir Saeed Harun, I think it would be an injustice. So as I was saying, he is one of the trainees of our late Babai Dermatology, Professor Tahir Saeed Harun sir. He received a gold medal from UK during his specialization course. He has always taken keen interest in academics and medical teaching. He is one of the pioneers in the field of aesthetics with a lengthy experience in the field of aesthetic medicine. He has received various trainings in multiple areas of cosmetic surgery from abroad. I welcome on stage our next speaker, Dr. Tahir Kamal. Sir.
Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairperson, Professor Azam Bukhari Sahab, General Zafar Sahab, sir, very honored to have you here, and Dr. Professor Anila and Shahid Sheikh, who organized this training workshop, and I am very honored and rather proud to be among you and sharing my experience. Dr. Shahid Sheikh has already elaborated about the basics of threats, and there is some reinforcement in my talk also. But I know it's exhausting, but I feel that without the basic concept and clarity, these procedures are obviously having risk, and my clear objective, sir, is to minimize these risks, because I feel in aesthetics there is minimal chance of error, because these are elective procedures, and we should be very careful while performing these procedures. We should know the basic concepts, and ultimate goal of these aesthetics is to improvise the facial aesthetics or any procedure which we are performing. We should get the best results with the minimal chances of any complication, because this is what we don't want. So, with your permission, and I thank my respected colleagues to be here. So I will go quickly through the few of the slides which have already been explained by Professor Shahid Sheikh Sahab. Threats, role in aesthetics and face and beyond. So the meaning of this slide actually means that threats are not actually being applied in the face area only, but there are certain areas which I'll explain in the later part of the talk that can be really helped by threats. So that is a helpful, and you should just pay little attention, because I will be more emphasizing on a few practical points, the techniques, and obviously the complications, how to get rid of these complications. The contents of my talk, objective and goals, as I already explained, I just want you to get the basic concept of these threads so that we can get maximum results. And my focus also will be on the only objective is to combine these threads with other procedures, biostimulation procedures, fillers, botox, to bring the maximum outcome which we actually want, because threads alone can't actually reach the goal which we want to achieve, because patients have a lot of expectation. So obviously we need to combine that, and I'll try to just share my experience how I combine them, and bit of, in the end, a futuristic approach which we have in the next coming training workshops. If you have little minor surgical experience, and with that, inshallah, we'll be doing threads in a different way and with different threads also, so that will be a touch in the end. So I'll just let you know. So my objective and goals are here. Anatomy, as Dr. Shahid Sheikh already explained, so I might be quickly going through my experience, some of the few important points. Skin changes, threads classification, selection of patients, procedure techniques, areas to be treated. And last but not least, very important, complications. Why to learn threads? Very important slides. I won't spend much time here, but for me it's a very important slide, because I always think when and where to use thread. Is it really worth doing in this patient? While selecting it, can it produce that result? And first of all, I would say that it has really helped me more than fillers and botox at times, because pardon me for that, but we
sometimes misuse fillers in certain areas, which we'll come to know in the end of the talk, where alone fillers can't help, but we just tend to use fillers and botox to correct certain deformities, and where I really believe threads can really play a vital part. So it is minimally invasive, and with proper technique, you can achieve much better results. So that's why I think we have taken a lot from plastic surgery in that respect, and we've been doing it capable of facial rejuvenation with combination therapy, which I'll explain. Slimming of face, common word, but ultimately what we want with age, obviously we use that V. So patient comes, ultimately if he or she can't explain in her own words, but actually we want tightening and we want a V face. Minimal downtime. If you haven't produced any complication, patient just go home, relax. This is one of the very important points. And I must say, patient with diabetes, underlying disease, this is one of the procedures which is safe, and obviously before that time, I can remember 10 years back, patient had no choice except for surgical lift. So the importance of threads, why we learn threads, because in surgical lifts, most of the time, it was just the skin lift with suturing and anchoring it. But the tissue was not addressed. Threads is something which is addressing the tissue, the formation of collagen, because the skin is actually lying on the connective tissue. If we are not reinforcing it, we are not producing collagen, that skin will lose. Maybe after 6 months, 1 year, giving so much money for that, going under knife, ultimately not getting it. So that is the importance for me to bring in threads. And the upcoming new threads, even the non-absorbable threads, with experience you can achieve a lot, which will stay for a longer period of time, and that is just a futuristic thing. I mean, you can. Hello. Ladies and gentlemen, please be seated. We are commencing with the lecture again. So I would appreciate if you cooperate and no disturbance at the back. So starting again from the important concept, everyone should ask why to learn threads, for the trainees especially. And we get excellent results with combination therapy. So this is an important area which you need to use, and for every patient you need to have a different approach, and you should have a background knowledge where to apply to get the best result. The other thing is, which I'll discuss in the later part also, many of the combination therapy we get like doing deep frequency and even with fillers. Deep frequency or these procedures, even hyaluronic acid, can produce collagen. After 6 months, the studies have shown that it increased the collagen up to 1.8% only. But with threads, we get up to 20% increase in collagen in 3 to 4 months time with PDOs, and 50% with PCM, polycaprolactone. So this is something achievable. Yes, it depends how you use your thread, using the long thread, short thread, and if it is PCL, but is it cob, it is barb, it is simple, that is a separate thing. But ultimately, if you're using proper use of PCL, which I'll also explain later, it has much of the advantage. So learning threads will give more collagen production and give us more better effect. What is thread lifting? What is the basic mechanism? I'll quickly go through it, but as we insert thread, obviously it causes tissue injury, but plus later on it gives a foreign body type of reaction. So initially there is histamine release which causes dilatation of blood vessels, and there is bombardment of cytokines, vasoactive, endothelial growth factor, even keratinocyte growth factor, fibroblast growth factor. These all factors come into action, and obviously there is activation of fibroblasts, producing more collagen. So there is reduced activity of metalloproteinase, and there is increased pro-collagen collagen synthesis. So these are the basic what is actually thread lifting. Every thread has its own function, which we'll explain this. You need to know this is what we are here for, and giving you a basic concept to make you a better esthetician in that respect.
So there is fibroblast activation, angiogenesis, obviously the tightening effect. So with granulation tissue formation, the active fibroblasts they change into myofibroblasts, and myofibroblasts cause contraction. So it's not just the lifting effect, it's also the contraction. It is tightening, but it takes time. You need to explain to the patient it's not a miracle, except the Mortine threads and double arm threads like Silet to cause immediate lifting effect. Otherwise, in mono threads or using the cork thread, the middle size thread in the mid phase, it will take time to produce collagen and contraction, so you're getting both the effects. And last but not least, obviously, wrinkle removal, especially with simple threads. Layers of face, just an important thing, you need to know that there is superficial fat here, then there is smash. You need to play in superficial fat most of the time. The smash lifting will be a little surgical thing, which I'll explain, minimal surgical lift or minimal smash lift or extended smash lift. When you're playing the scalp, there is no subcutaneous fat, so you need to be little careful, especially when you are going for high lift, using superior temporal ligament as a retaining ligament. So in that respect, there is no subcutaneous fat. If you are passing a needle, especially with a sharp needle, you need to be careful because it can really bleed. So I think better option is the blunt type. And you need to be careful in these areas. When you are fixing, your fixing point is the scalp. So Dr. Shakshi already explained. I'll quickly go through it. For me, I'll just take a few minutes, but these are the fat compartments. As you are young, the fat is evenly distributed. But with age, compartment formation becomes more prominent. What is the importance of these fats? You need to have this picture in mind, especially once you are going for the newer technique, which is minimal access multiple plane suspension. In that technique, you go underneath the zygomatic arch, bit of more experience, it is threaded, and then you form an exit, and then from the same exit point you come back. Once you are making a second loop, you are moving superficial. So I repeat, you go under the zygomatic arch, it is a deep plane, and in three planes, near the masseter, near the zygomaticus major muscle. So there are two loops in purse string manner. You again exit, and then you again making an entry point. Once you are going deep through under the zygomatic arch, you are going through these buccal fat. You need to have these concepts going through the medial buccal fat or lateral buccal fat, because lateral part is relatively immovable part, medial part is movable. So you need to know that if you are passing through these entry point under the zygomatic arch, you pass through these buccal fats. Need to be safe, just to avoid the injury or the complication. So that is minimal access, multiple plane suspension, which is a little like ahead of these threads which you are discussing, but in near future, inshallah, we'll be telling you those things. So I proceed. Here, if we see, these are superior temporal ligament, the inferior temporal ligament. These are very good retention, the fixing point if you're going for a high lift. Patient above like 50 years of age, 55, you need to have this suspension here because that would give a more better lift for initial. Otherwise, you put along with the long threads, you put middle threads, face thread, produce more collagen, and she will get better results in that respect. These are already explained parotid depth, so we need to have this course. Retaining ligament, as I explained, this is the superior retaining ligament, inferior retaining ligament. These are the importance, which is ear trough ligament. This is middle cheek, mandible. These retaining ligaments, I will just hold my slide for a couple of minutes or time, just to see these retaining ligaments, because these are your fixing points. And other points, once you are passing a long needle or long thread, you need to have these ligament or retaining points in your mind, because if you pass through these retaining ligament, it will better hold in the skin and there is less chances of dislodging. So better hold, better pulling,
So these retaining ligaments should be kept in mind. Now, just adding a few words here. You see these teardrop ligament, the importance of thread here. If you're correcting teardrop, we usually go for filler, which I feel sometimes, most of the time rather, it is not very satisfying because it needs a lot of experience. I know you need to approach from below towards the eye. That gives better. Most of the people approach directly to fill the teardrop. It's actually the loosening of this retaining ligament. So if you're talking about the combination treatment, okay, you go for filler, but if you put inch thread, the small ultra V threads here to strengthen these teardrop ligament, it will give better result and for longer period of time to crack your teardrop. Not just fillers. That would not really help. Patient is not said. Either patient will have bulging eyes or so. I feel the importance of thread actually here, or sometimes even with the feeling of nasolabial fold. As we age, as Dr. Shashik said, there is, because of the gravitational effect, there is movement of fat downwards. Alright? And actually I've been doing this also. Most of the time initially, you just try to fill with the filler these nasolabial areas. But now, I feel with learning of threads, if you use even mono threads or pop threads, and with proper vector reinforcement, you put these threads here, it will give a lift and repositioning of this fat. It will give better results for nasolabial fold rather than just giving a filler inside. That would alone would not be able to give you satisfying result to the patient. Even with, especially in the patient who is actually about like 40 or 45 years of age, where there is prominent nasolabial fold. So you really put threads along with filler, that would give much better effect, especially with vector reinforcement threads in this direction and 90 degree to the cheek area, and that would give a better pulling effect. Or putting a long thread and pulling it, because that would pull this cheek area. This will give better effect rather than just giving a filler in the nasal. So this is the importance of retaining ligaments and when and where to apply. So these are the just changes which I already explained. Movement or redistribution of fat, and there is resorption of bone. One hard fact I like to mention, once we are combining filler or Botox, there is something which we actually don't want to listen, but this is studies have also proven it, that hyaluronic acid also causes, because of the increased osteoclast activity, it causes resorption of bone. And with Botox also, because there is misuse of muscle, there is still a resorption. So doing these procedures in old age patient with losing, obviously we don't actually mention it to the patient, but these are there. And here comes the importance of threads. Especially if you want to go for filler in that respect, usually choose for non-cross-linked fillers, because in that respect the osteoclast activity with those fillers are lesser, so there is less resorption. So just combining the biostimulation and other rejuvenating methods with the threads and importance of threads also. So we're talking about the aesthetics. These are the layers which you play in. So just quickly go through. If you are wrinkles, what we do? Go for peeling, retinol, dermabrasion, epidermis, medial mesotherapy, biorevitalization, remodeling of. So, just a word about PCL or Elance, which is of polycacrodectone. It is suspended actually with a gel carrier, which is carboxymethylcellulose. So, advantage of this patient, any patient you are selecting who has lost skin or atrophy, like old age, 60 years of age, in that respect, threads alone might not be able to give you the satisfying results. So, in those areas, you can use these fillers, especially Elance, because it retains for a longer period of time, and initially because carboxymethylcellulose, it absorbs or retains more water, so it volumizes and gives a better effect than threads alone. So if you
doing procedure, you can say lancing LV or plasma sculpt for patients, especially in cases of HIV or more atrophic cases. As I said, L therapy or HIFU, high intensity frequency ultrasound, reduces collagen, like only increase in collagen 1 to 1.8 to 2% in 6 months time. Reinforcement, even I was saying sometimes autologous fat augmentation can be done in patient with very lean skin, old age, 60, 65 plus. So, like filling it and giving it a better anti-aging effect, you can use through liposuction, mini liposuction, the fat and augmentation and place it in the face. This is called autologous fat augmentation along with threads after 2 months. Or in patients who are obese, which obviously one of my contraindication very obese patient. In that patient also you initially plan with any deep radiofrequency procedure like HIFU, 2 or 3 sessions to make her skin little slimmer and then attempt thread, because if you directly attempt thread, you might not be able to satisfy the patient, especially having a very chubby or obese face. So in those cases, I don't think you straight away jump for thread treatment. BCL, polycaprolol, lactone and lactic acid. But just concentrate on one thing, fixed versus floating. This is a terminology which I personally look into. Once you are seeing the patient, you need to decide whether she needs more lift or more collagen formation. A patient coming to you around 30, 35 years of age with lean face, fine wrinkles, she does not need much of lift, but she needs more for firmness, collagen. So in those cases, your selection would be the floating one, which are not fixed, not clearly having a fixed entry point. So in that case, floating or short threads, just a simple word for that. And fixed, which are talking about the long threads, which I already mentioned, having retaining ligaments in mind, having fixing points, using long thread for the lift or double middle threads to have a better result and better fix tissue. Already explained by Dr. Shahid, so I've just go through it. Just remember zigzag type of thread. It is not for lifting, it is not for firmness, it is just giving a support to long thread or the other threads not to dislodge. So this is the only purpose of zigzag thread. Unidirectional, bidirectional and ciliate type of thread. Molding thread. Why this slide only for show? Molding thread are like cone thread, but they are non-movable. In ciliate we have cone threads, polylactic acid plate, but we can move that. Advantage of ciliate thread is that if you are pulling and getting a dimple also, you can further move it in an opposite direction 3 or 4 times, and the mold, these cones will adjust in the skin according to your pressure. Except in few cases when you are too high or superficial to the skin, then it cannot be handled. Otherwise, they are movable. Second advantage of ciliate is if you are using bidirectionally in 2 directions, like you are making a job. Ciliate or the movable cones, they can take a different vector. So using L shape for the jaw line, it can mold and it can change its direction. This is the advantage of ciliate thread. The problem with the molding of, which you should not attempt at least, I think, before 6 months or 1 year time. If molding thread, they have very good better hold, just like cones. But the problem is, if they are stuck up, or because of infection they are like trying to protrude out, or they are stuck up in the skin, it is very difficult to really take them out. You need to have a little cut with 11 Parvis blade, and then you take with a forceps, you need to pull it out. Otherwise, they are quite stuck up, and after 3 months, it's very difficult for these molding thread to really take them out of the skin. Otherwise, they have very good molding power. Remember, that's why I just emphasize the
importance of these molding threads. Best candidate include people with mild to moderate signs of aging. I'll be trying to play safe, play without excessive sweating, and with no underlying medical problems, especially connective tissue diseases, etc. And especially patient those who understand the possibility of risk and complication. Always in aesthetics, you need to assess this patient cognitive. Does he or she understand the complications? Poor candidates, those with excess of those who have excessively sagging skin, advanced age, patients who are obese, which I have already mentioned, patients who have got, they won't be very satisfied because even if you use so many threads, you can't use a mesh because you don't want much of collagen. If you use a pulling thread of long threads, it might give a pull, but I think patient would not be able to appreciate. So be careful. Try to, to correct the chubby face or the fat area with minimal liposuction maybe at times, or using deep frequency. First prepare lactation for that and then attempt for threads. And yes, those who have already gone through some procedures in the past, like maybe liposuction, maybe surgical facelift, they have excessive fibrosis. So remember, this is very important. I just need few minutes attention, but in those patients you need to take proper history because the thread would not pass or you come up with bleeding because the patients who have undergone previous surgeries, they have angiogenesis, new blood formation, so tend to have more bleeding. PDO threads. How can you use just simple PDO thread with different techniques? Number one, vector linear technique, as Dr. Shai Sheikh said, okay, you just pass in a linear fashion, just make a vector, as he already told. Initially, you can assess by lifting it, in which direction should I use my PDO thread. Reinforcing thread technique, yes, for me, it's using the thread in the linear fashion and then at 90 degrees put similar number of threads in the same direction. That is also called vector reinforcement. The fan technique, simple, single entry point, you pass the thread and from the same entry point, you use different direction, going in the middle phase. If obviously the patient is not that much supporting with a lesser number of thread, you are trying to take result and lift, you can use a fan technique, using 2 or 3 threads in different fan technique. Sandwich technique, simple mono thread, you pass and you know the level, then the next thread a little below it and then below it. But still playing in the subcutaneous fat. And sewing technique, these are for longer thread, pull out thread, half of it, and then again pass it, little bit, and this is also somewhat like a fan technique, but thread has already covered most of the area to produce more collagen. If you are using, you have a limited choice of threads in your hand because of the patient socio-economic factor, whatever. So you can use this sewing techniques to get more results. In double needle, you can use the straight technique, angle technique, which I'll show in these pictures, U technique, post-mandibular entry technique, and the combination one. These are for the double needle threads. Initially, I told you about the simple PDO threads, but this is for the double needle threads like Sinet, or you can use harping, you can use different techniques in double needle threads. Simple linear technique, angle technique, and this is what I told you, the capacity of Sinet, because it can turn its vector, so it's very easy for the movable cones. If you are playing with the molding type of thread, which is not non-movable cones, the easy word to use, you cannot just change the vector. It's very difficult. Well, that will cause kinking, or with PDO thread, chances of kinking are more. Lesser with PCL. Because sometimes you pass thread and you just tend to move it. Oh, this is in the wrong plane. Please don't do with the long threads because that would cause snapping, and ultimately that thread tries to come out or protrude out of the skin
or it will surface on the upper side of skin. Maybe it is visible after 2 or 3 weeks. You need to take out that thread again. Double arm technique. So in this, you have double needle, and you want, for one thread, you want weighted area to be reinforced. What will you do? You pass the needle from here. Okay, this is there is no exit point. Again, you pass that needle from here to here because you have already made 2 openings. And again, take out the needle. Again, reinforce that needle. Okay. Sorry for that. Okay. Again, just try to explain. It's a double needle thread. You pass the thread needle from here, but you haven't taken the exit point. You pass another hole you've already made. Pass the needle from this hole. Take this needle out, and then again pass it on the other side. And these exit points are pulled from the hanging points. So in that direction, you can having a more better entry point and greater area to be fixed. Again with the same technique, make these holes initially, and this is with the folder, this scalpel, which I might be able to show you also. Just make a quick, just like stitching, you make 2 holes and then pass the needle. Make a little exit, again use the second needle, pass it from here, and then pass the second needle from the second opening point. Combination. How to select patient? And this is my message, not all conditions can be treated with threads alone. Some of the important indications: telangiectasia, pigmentation, scar, stretch marks, cellulite, and alopecia. So these are some of the important indications, but I would just like to add the pigmentation, like in periorbital area, dark circles, threads can play a role because it also causes release of transforming growth factor beta 1, and that reduces the tyrosinase activity. So if even I am trying, I might share my experience with that. Even in melasma, using mono threads can sometimes give better result, but it is something which I can't really claim right now. As working just how melasma would be affected with mono thread is something which I like to share here. Contraindications. Everybody should be knowing. It might be a reinforcement, but very important. Any inflammation condition, any patient with already having an implant or permanent filler like silicone or polycaprolectome, previous invasive procedures in the area, keloid tendency, bleeding tendency, and last but not least, very important, you have to assess because this goes unnoticed, and this is some psychological or neurotic issues. Already explained, but just a repetition, pros and cons. Preparation, which obviously we enforce in the hand-on training, but obviously selection of threads, you need to know when and where, how to apply threads and which patient needs which type of thread. Sterilization, very important, vector reinforcement, entry-exit points, local anesthesia, proper tunneling, and entry-exit points. This slide you have already shown, but for me, I just go for the initial marking just to avoid the danger area, and here, I think this is my line. For most of the transfer facial artery or carotid duct, so I would like to avoid, so this is the basic marking. Different type of vector reinforcement according to age, according to type of skin, the sagging, the loose skin versus the fat skin. So these are the vector lines. Some important point to give you local anesthesia, which I just put this right here. Different
So this is the important thing which I have just mentioned. So just a repetition so that you can register it well. For nasolabial fold, just an example, you can use thread in mid direction and that's this 90-degree reinforcement for to have better result for nasolabial. Superficial temporal nerve, branch of facial nerve. Way to use thread, these are the areas. So you have a very wide area to play with. But these are a little few things. Even after liposuction, you get lumps of fat tissues accumulated at side, especially when you're going for liposuction in the thigh area or the arm area. So after 2 months, if patient comes with that problem, I honestly go for long threads and they have produced satisfactory results until they do some major complications. So this is something with belly, with thigh, because we all know that besides the activation of myofibroblast, threads cause deep maturation of fat also. So slimming of face, slimming of area, and treating cellulite, threads have a very important role. So remember it. So these areas where you want like double chain, you want to get rid of cellulite, threads have their importance, and we should keep that in mind to use threads in that treatment also. For acne scars. But 2 indications for me, I'm just trying but not getting good results. In ice-pick scars, no good results. But with rolling type of scars and box scars, yes, if you use mono threads in the mesh, good results. Vector reinforcement, quickly going through. I know you all exhausted for this is a mesh formation for eye wrinkles. So we usually go play with Botox for crow's feet, but if we go for threads in this area, patient like maybe for 2 years, I think she wouldn't have wrinkles or the person who can't have crow's feet. Jawline, neck, belly, not very obese, but in these cases, yes, it helps. Resistant fat for this sort of arm, very good candidate, but obviously with rational expectation. Mini facelift. Those who have mini surgical experience, I think dermatologists would be invading it. Here I just like to take a few minutes. Now, if you go for extended smash lift, which is not in our domain, honestly speaking, you give a pad from here, keeping superficial temporal artery in mind. And we go all through the ears of it and then behind the ear. This is also called the neck lift also. No, it's not for us. But minimal lift it will be our future also. You just give a cut for patient who is actually having more sagging skin. Little cut and up to triggers you stop your incision. Now undermine it, playing in the subcutaneous fat, and you get hold of the smash. So smash is movable. Now if you want to play safe, don't go for extended smash, because extended smash will be up to this level. Come to this level only. You get hold of the smash, lift it, take a monocryl or athron suture and fix it with temporal fascia, and you get that sweep. Use non-absorbable absorbable sutures first, and then interrupted sutures here with protein 50 or 60. 50 is good enough, 60 won't hold, but that is something which you try for mini facelift. So this is called upper smash lift. Yes. Complications, obviously, and no procedure without complications. So dimpling, which is like 16% in overall percentage. Pain. When you injure the nerve, this is not a small complication, because for 2 to 3 weeks patient will have a shooting pain, and he or she would be after you. So you know the course, the facial nerve, especially the transverse, the zygomatic arch, facial nerve crosses zygomatic arch. So when you're crossing the zygomatic bone, you should be careful while using the thread, because that can injure the superficial branch, the zygomatic branch of the facial nerve, then the transfer branch, the buccal branch, all these branches you need to be careful when you are putting thread, because that can cause pain. Hematoma, how it occurs? More chances with
needle type of cannula, and especially hematoma produces once you have put the thread, you pull it out and then again you put it. Especially with the needle type, that is the place, the point where you cause most of the time you bleeding. So there is immediate bleeding, and with movement you don't know, but after 2 or 3 days patient says, I started getting hematoma because you have made so much movement of thread inside the face. At that point you might not realize it. So once you are putting thread, my message is don't use force, don't be so aggressive about it. Keep a gentle hand. Once you know the plan, yes, you are in the right direction, so thread will move itself. If there is any resistance, I hardly move for half or 1 centimeter. If I need to move more than that, I just take out the thread. Because I know that it will just snap or it will kick. Infection, very important. When you damage a nerve, sometimes obviously there is numbness, but that recovers in 2 months' time. Pseudogranulomatous reaction, and yes, asymmetry. Because if you haven't chosen the vectors for both sides equally, or you have used imbalance, or on both sides the number of threads are not same, the direction vectors are not same, then it might be possibility that you come up ultimately land up with asymmetrical phase. So you need to correct that with that. Dimpling is very important. Yes, bleeding, hematoma, anesthesia, numbness of skin, that is something. But there is one important also complication. If you are making a single entry point using too much threads passing through it, that will cause a little a lump in that because there is pseudogranulomatous reaction. So don't must more threads through single opening, especially with the core threads or barb threads. So through single entry point, 2 maximum, I think 3 threads, not more than that, because passing more threads through that, it will cause pseudogranulomatous reaction. They will be lump at the entry point. So in that sense. Otherwise, some of the other complications, threads become visible, they come out of the surface because of the infection, because of the level you haven't put in the right level. So in a couple of weeks, initially there is edema, so the skin is covered, you are not realizing that thread is superficial. But once the edema settles, you start seeing the thread comes up. I can see the thread here. So need to take out if it is molded type of thread, then you need to have a little cut, take out the thread. It's very difficult to really take out the molded because already embedded in the subcutaneous tissue. So molding thread is good for molding, no doubt, but use it with caution. You fear the complication. Oh. Dimpling. Danger zones. Just have it. So this is my conclusion. Patient selection is important. Must know how to handle the complication. Yes, important. And combining thread with other procedure can produce excellent result, but you know when and how to use these combination treatments. Last but not least, no procedure is without complication. I must say, until unless you produce complication, you don't know the procedure. But with minimal risk, you should be knowing, what can happen. So at least that much knowledge can really help. So in the end, just wisdom is the abstract of the past. Okay, we have learned something, we have become more wiser, but we can make our future beautiful. So, but beauty is the promise of future. So I thank you all for this. Thank you very much, sir. An enlightening presentation by Professor Dr. Tahir Kamal. One of our very distinguished guests has recently arrived, Professor Dr. Harun Nabi, who is one of the master trainers, the great aesthetic physician. He's here with us. Thank you, sir, for joining. So the lecture was great. ऐसा लगा कि हम सब बहुत खूबसूरत होने वाले हैं और खूबसूरत बनाने वाले हैं. So it reminded me of one of the few poetry lines by Ahmed Faraz. My best to pass the periorbital threads, hair threads, and eyebrow lift. And my other colleagues
They will inshallah lift the cheeks, jawline, marionette, chin, and Dr. Sania inshallah revitalization, biostimulation, bioaesthetic points from now uncrossed hyaluronic acid. With my Dr. Kaksha is with my. मैं पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ माशाल्लाह ना कि ये जो जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं ना उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो हमारी ट्रॉली है वो कंप्लीट है, उसमें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं। अगर कोई कमी है तो ड्यूरिंग प्रोसीजर यू विल सफ़र। इवन सनी प्लास्ट ना हो, इंसुलिन सिरिंज ना हो, रे बैंड ना हो, इवन नीटो टेप ना एट द एंड आपको मिले। तो इसलिए आपके पास के हाउ टू मेक द Please be silent and listen to Dr. Shahid. Please be silent. बेटा ग्लव्स पहन नंबर पे दो, ठीक है बेटा। आप भी जो है ना ग्लव वगैरह पहन लेना, जो ट्रेनीज है मेरा पर जिनको मैंने सिखा बाकी आप वहाँ बैठ जाएं, आपको मेरे ख्याल में कैमरे में सब कुछ नजर आ रहा है ना। हाँ हमने पेरी ऑर्बिटल एरिया की जो एनाटमी थी, जो पिंच एनाटमी थी, वो हम लर्न कर चुके हैं ना। अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। वो ले आना बाद में, ठीक। अच्छा, ड्यूरिंग जो प्रोसीजर है ना, जो के पेशेंट हैं वो बजाय के वो बैठे आराम से सबका करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें मन सब्र ज़फ़रा तसल्ली वाला काम है, ठीक है। तो कोई इस तरह ना हो कि आप कोई हरी दिखाएं या आप हसल बसल हो। आपको मेरे ख्याल में वहाँ आप उस साइड पे आ जाओ, दूसरी यहाँ से सामने वाले दो टेप देना, नहीं तो टेप तो यहाँ टेप लगाओ, छोटी नहीं और चलिए ना चले कोई बात दिस द वाइब्रेटर। इससे ये होता है कि लोकल एनेस्थीसिया में ज़रा पेन कम होती है। जब हम प्रिक करते हैं नमी क्रीम लगा सकते हैं और एक ये वाइब्रेटर, ठीक है। इससे हम जब प्रिक करते हैं तो टेंशन डाइवर्ट होने से टू लेसन द पेन। ये मैडम आप पकड़ लें, ठीक है। इससे ये हुआ कि देयर विल बी नो हिंड्रेंस फ्रॉम द हेयर्स। जो स्कैल्प हेयर है वो हमको उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सपोज्ड एरिया है जहां हमने प्रोसीजर करना है, हम इंशाल्लाह इंफ्रा ऑर्बिटल थ्रेड्स डालेंगे, ठीक है। पहले हम स्टरलाइज करेंगे। बेटा अल्कोहल से देना साइड ट्रॉली से ऑपोजिट साइड पे पड़ी है, इस साइड होनी चाहिए। चलें थोड़ा सा इसको वैसे होता है ना, थोड़ा इसको सेट पे ट्रॉली को कर लोकल है। ये लोकल एनेस्थीसिया हमने पहले ही इसमें डाला हुआ है, लेकिन आप भी रिमेंबर इसको ना फुल नहीं करते। अगर फुल करोगे ना
तो ये जो हैंडल है, प्लंजर है, जो जिससे हम प्रेशर डालेंगे, ये बेंट हो जाता है। अगर इसको हम हाफ डालें तो उससे स्टेबिलिटी रहेगी है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ, ये अब इसमें जब मैं लोकल दूंगा तो यू हैव अ स्टेबल हैंड टू because usually we have to around the eye area 0.5 ml हमने लगाना होता है, about 10 to 20 units, ठीक है, bow in both sides at and to make the entry point when we pass the cannula there will be no pain. Sometime एक और टेक्निक बताता हूँ, जब आप कैना कॉर्ड लगाते हैं ना तो समटाइम आप कैना कॉर्ड हाथों लेते हैं तो फुल 100 यूनिट पे ले जाते हैं, उससे फिर उसकी मिक्सिंग नहीं होती। तो ये एक स्टडी थी कि आप उसको 8 पॉइंट तक भरें, इसमें इतना प्रेशर है, आप मूव करोगे नहीं होगा, लेकिन जब आप ऐसे मूव करोगे तो ये खुद उसके ड्रॉप्स मूव करते हैं, ठीक है। उससे उनकी जो सोल्यूशन है वो इक्वली सोल्यूट और सोल्यूशन हल हो जाते हैं इक्वली। जब हम स्पेस देते हैं ऊपर नीचे मूवमेंट खुद हो जाती है। ये फिलिंग में देयर शुड बी नो एयर, इसमें थोड़ी सी एयर है और मैं इसको फिंगर टिप से प्रेस कर रहा हूँ, ये इसको मैं ये अब इसमें तो इस पे एयर नहीं है, ठीक है। अब मैं एक एंट्री पॉइंट को मार्क करूँगा, पेंसिल बेटा देना। अब आप पल्पेट करोगे सुप्रा ऑर्बिटल रिम, इंफ्रा ऑर्बिटल रिम और ये लेटरल मार्जिन और साथ जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो ये जाइगोमेटिक बोन की एक आर्च है। अब ये एक जंक्शन बन रहा है, ये जंक्शन मैंने कहा था 1 फिंगर मेथड, ठीक है। तो 1 फिंगर मेथड में आपको स्किन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मिल गया। जब मैंने पिंच किया, यहाँ से कौन सी वेसल गुजर रही है, यहाँ से कोई वेसल गुजर रही है, जाइगोमेटिको ऑर्बिकुलरिस है, वो गुजर। जब हम पिंच करेंगे सॉफ्ट जेंटली तो वो स्किन सॉफ्ट टिश्यू के नीचे रह जाएगी। अगर सपोज हम अब ये जो इसकी लेंथ नीडल की कितनी लेंथ होती है 12 mm, 12 mm वो नियर टू बोन है। अगर हम ज़्यादा डीप जाएंगे, अगर प्रिक हो जाएगी तो स्लाइट ब्रूजिंग हो सकती है, तो इसलिए इसको सुपरफिशियल हमने रहना है। ये थिनेस्ट पार्ट है, जैसे हमने कहा कि अपर आईलिड 0.38 mm है, नीचे वाला 0.83 mm है, और इधर चूंकि सबकुटेनियस टिश्यू है एट द जंक्शन ऑफ जो रिम है ना, पेरी ऑर्बिटल रिम का लेटरल बॉर्डर और जाइगोमेटिक बोन का मीडियल बॉर्डर जो आर्च है, उसके अगर 1 सेंटीमीटर हम जाएं, इसको अब पिंच एनाटॉमी से हमने स्टरलाइज कर लिया है। अब हम यहाँ लोकल देंगे, ठीक है। तो ये लोकल पॉइंट बेटा ये बनेगा, ओके, 1 फिंगर अपार्ट फ्रॉम द आउटर कैंथस, ये। अब हम उस पॉइंट को स्टरलाइज साफ कर लेंगे ताकि कोई पेंसिल के पार्टिकल्स नीडल के साथ अंदर ना चले जाएं, ठीक है। वेरी मसाज करो, रेप दो, रेप है ये बता, ये छोटा 1 ऐसे नहीं देते, ये लो मैं बताता हूँ, ये पकड़ो, इसको ऐसे लगा के पूरा, तो ऐसे मसाज करते हैं, ठीक है। दूसरे बेटा इसी तरह इसको फोल्ड करके बनाओ है 4, क्योंकि हमारे असिस्टेंट जो क्लीनिक वाले बने इस तरह के इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इससे आप इस तरह भी जब लगा देंगे तो बेटा ये आपने पकड़ना, ओके। इसको मसाज करो, ये मुझे लोकल दे दो, ओके। वो उस पॉइंट पर आप उतनी देर में मसाज करोगे ताकि
इसी तरह 1 सेंटीमीटर पार्ट ये मैंने प्रिपेयर किया लैटरल बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिटल रिम, ये जाइगोमेटिक बोन, और ये माशाल्लाह हमने पहले से कर लेते हैं ब्लड वेसल में, तो ये नहीं है, ठीक है। तो अब हम तो देंगे, ओके। अब अगर इसको आराम से निकालेंगे ना तो ब्लीडिंग नहीं होगी है। मसल मैं इसको रख दिया, मैं आराम से निकालूंगा, ठीक है। जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो देयर विल बी नो ब्लीडिंग पॉइंट, ठीक है। प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है, मन साबारा जाफारा। तो ये हमने उधर इसलिए थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुई कि इसने जो असिस्टेंट है, क्योंकि मेरा असिस्टेंट नहीं, कोई बात नहीं, और लोग कर देना बेटा। इसको बेटा फुल ना करो है, मास्क पे दो थोड़ा सा, क्योंकि कैनुला वाला है ना, तो ये बुके थ्रेड है। बुके का क्या मतलब है? बुके में 7 थ्रेड्स हैं। कितने हैं? 7। उसमें पीडीओ भी है और पीसीएल भी है, मिक्स है, ठीक है। इधर सही लग गया बेटा, ये मैं नीडल लगाता हूँ। पेन हुई नहीं हुई ना? चले, पेन नहीं हुई, ठीक है। ये हमने ये रखा, दोनों तरफ बेटा मसाज करो, मैं तुम देर में थ्रेड निकालता हूँ। ये मेरा थ्रेड दो बेटा, टिश्यू पेपर है, थ्रेड निकालो बेटा। बेटा टिश्यू पेपर पकड़ो, नीचे रखो, नीचे नीचे नहीं, वो किधर के ऊपर जो रखे हुए, काफी थ्रेड से कर लीजिए। ये कुछ वो किधर गए, टाइगर लिफ्ट निकालने के आपने मैंने कहा उसमें तो नहीं है, नहीं QLM टाइगर लिफ्ट है। ये L ब्लंट कैनुला वाले हैं, और ये V मैक्स है जिसमें PDO और PCL मिक्स है। ये बेटा आ रही, तो ये मैं दुबई से लाया था। ये लेटेस्ट है जिसको हम बुके थ्रेड बोलते हैं। ये डर्माकोल में इसमें सिंगल होता है, ठीक है। हम बुके थ्रेड डालेंगे, ये इसके अंदर रखो, सीजर सीजर ये सील्ड होने चाहिए, जो यूज्ड हो जाए, कुछ बच जाए उसको भी सील कर लें, ठीक है। ये बेटा मैंने आपसे एक एक डलवाना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। सर उसको दोबारा कैसे सील करना है? वो मैं बता देता हूँ बाद में ना। ये वाली काम कर, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये बुके थ्रेड है, आपको नजर आ रहा है कि एक नीडल के साथ कितने थ्रेड हैं? पिक्चर में आ रहा है, नजर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बुके थ्रेड। इसकी जो होते हैं ना, ये नीडल साइज, और वो उसके ऊपर लिखा होता है थ्रेड की लेंथ ज्यादा होती है, नीडल की लेंथ कम होती है। तो जब बोलते हैं ना, पहले गेज बोलते हैं कि कौन सी गेज हम इस्तेमाल करें नीडल की। अगर कैनुला है तो L ब्लंट कैनुला, W ब्लंट कैनुला भी है। अगर नीडल है शार्प, कौन सी गेज है? पहले नीडल का साइज आएगा, सपोज 50 है और 70 mm थ्रेड है, तो हम बोलेंगे 50/70। उससे फिर हम जो एरिया सिलेक्ट करना है, चूज करना है, उसको मेजर कर देते हैं। मेजर करने का ये फायदा होता है कि ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है
कि हमने कौन सा एरिया लिफ्ट करना है। जैसे हमने हैंगिंग पॉइंट बनाए, फिक्सिंग पॉइंट बनाए और वेक्टर ड्रा किए। अब हमने लोकल लगा लिया आइस के लिए, आई के लिए, ठीक है। ये है एल ब्लंट, नीडल नहीं है। ये नीडल इसलिए नहीं है कि ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ फेस है, पेरी ऑर्बिटल एरिया की जो स्किन है थिनेस्ट है, तो एल ब्लंट कैनुला है, ठीक है। अब इसको डालने के लिए पहले हम एक होल बनाएंगे ना। होल कैसे बनाएंगे बेटा, वो मुझे ना नहीं, मेरे पास कैनुला वगैरह है ना, बॉक्स किधर है, ये लो इसमें डालना। पंचिंग नीडल, इसका मतलब है कि हम उठा लो बेटा, हाँ, उठा लो, यानी कि इसमें पंचिंग नीडल है और कैनुला है, यानी कि एक पैक में दोनों चीजें हैं। एक से हम पंक्चर करेंगे, और अगर एनेस्थीसिया देना है आगे ट्रैक में, डायरेक्शन में अगर हमने एनेस्थीसिया देना है तो 3 cc या 5 cc नीडल के साथ या 10 cc नीडल के साथ भी अगर चीक्स पे हैं, लॉन्ग हैं, तो कैनुला लगा के उसको हम फिर थ्रू कैनुला लोकल लगाएंगे, ऊपर स्किन से नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बेटा ओपन करो, शाबाश, ये हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। ये हम इससे पंक्चर करेंगे, ये देखना कितने गेज की ये नीडल है, ये इससे हम इसको पंक्चर करेंगे उस एरिया को सेंटर में। बेटा पेन हो तो बताना है, पेन तो नहीं हो रही। अब इसको मूव करेंगे, ठीक है, इससे जो कैनुला है ना वो पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैं इस वक्त सबकुटेनियस टिश्यू में हूँ, है, तो मैं होल को बड़ा कर रहा हूँ ताकि मुझे रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन ना महसूस हो, उसको डाल देंगे, ओके। और मैंने उसको पिंच भी किया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये शार्प नीडल है और इसका गेज तकरीबन आई थिंक 16 या 18 होगा, ठीक है। कैनुला का उसके ऊपर लिखा होता है ये। अब इसको बेटा आप ना ये वाला स्लेब है उसी तरह पट्टी बना के ना इसको लगा देते हैं। अब मुझे ठीक है, ये मैडम ने मुझे स्टरलाइज होल में, अब ये कैनुला हम उस होल में डालेंगे, ये साफ करो ताकि मुझे होल नजर आए, ओके। ये मेरा हमसे उस होल में चला गया, ये मैं वर्टिकली गया। अब मैंने स्किन को छोड़ा और मैं इसको पुश, जब स्किन को क्या करते हैं पुश बैकवर्ड्स, और कैनुला को मैंने ये टाइट किया और उसको मैंने एंटर करना शुरू कर दिया इन द सबकुटेनियस टिश्यू इन द बिलो द इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया। तो ये मसला इजीली ये ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि ये पास हो जाए, और ये पास हो गया, यानी कि सॉफ्टली मैंने प्लेन जब अडॉप्ट कर लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नॉब है मैं इसको प्रेस करूंगा, एक फिंगर टिप मिडल आगे रखूंगा और इसको मैं मूवमेंट दूंगा, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों दूंगा कि जो थ्रेड है 7 है, अब इसमें ना कितने हैं 7, पीडीओ भी है, पीसीएफ भी है। क्या फायदे होंगे इससे? इससे रीजनरेशन ऑफ कोलेजन होगी। इवन जो सनकन आइज होती हैं, जब रीजनरेशन होती है, ट्रामा हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, सर्कुलेशन बेहतर हुई, डार्क सर्कल बेहतर होते हैं, जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उससे स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होती है, ठीक है। अब मैंने इसको मूव किया तो थ्रेड वहाँ यानी अंदर इसके एंकरिंग होगी, है, वो एंगेज हो गया। अब इसके साथ थ्रेड है नहीं है, तो ये माशाल्लाह ये नॉब को साइड पे करेंगे, थ्रेड अंदर जा गया, काटने की जरूरत नहीं है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के कितने थ्रेड्स डालने हैं, ठीक है। तो अब हमने एक दूसरी तरफ डालेंगे, जब हम हैंड्स ऑन करेंगे उधर तो वहाँ फिर हम आप लोगों से दिलवाएंगे, आपका ग्रुप मेरे पास आएगा, ठीक है। शाबाश। अब मुझे एक और थ्रेड चाहिए, पहले मुझे चाहिए कैनुला, वही ये उसी का ही है, इसी पेशेंट का है, इसी को यूज करेंगे क्योंकि इसी पेशेंट का है। दूसरे पेशेंट के लिए दूसरा पैकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बेटा पेन ऊपर है, पेन तो नहीं ना जब डाला था, हाँ चलो थैंक यू। क्या अच्छा आइस का डिफरेंस, हाँ थोड़ा सा उठ के दोनों को देख लें
कि जब हमने डाला तो आया बल्ज हुई, उसमें डिफरेंस महसूस हुआ। अगर नहीं हुआ तो मोर थ्रेड्स डालेंगे, हैं मोर थ्रेड्स उसी होल से 2 3 4 5, ठीक है। मेरा बेटा ये मैं बिजी हूँ, जब बिजी कोई भी ट्रेनर बिजी हो तो उस वक्त कोई भी प्लीज क्वेश्चन ना करने आए हैं। बाजी मैं ठीक कर रहा, क्या कर रही हो, मुझे काम करने दो। ये मेरा बेटा क्या कहना है बता दें। अच्छा इनको फिर वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम मैं डलवा दूंगा टाइम। चले कुछ करते हैं, फिर वो एक ही चीजें देखते जाएंगे। चले पूछ ले, देख ले, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। हाँ मैं हाजिर इंशाल्लाह। चलो ठीक है, जैसे बेटा बेटा पेन हो तो बताना है, ठीक है। शाबाश। अब मैं इसको मूव करूंगा। ये मूव इसलिए करते हैं कि जो होल है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि हमारा कैनुला है ना बेटा, वो कैनुला का साइज तो देखो कितना है, उस पर लिखा हुआ है 15 mm है। ठीक हो गया। ये मैंने होल बनाया, पिंच इसलिए किया कि जो ब्लड वेसल है वो नीचे ही रह जाए, है ना। कौन सी इधर कौन सी है, 1 सेंटीमीटर पार्ट है ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिकुलरिस, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको भी फेंकेंगे नहीं, सम टाइम है ना वो कैनुला नहीं जाता है, साफ करना बेटा उससे, हम नहीं जाता तो फिर और होल करना पड़ता है ताकि हम कंफर्टेबल रहें ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब नया थ्रेड बेटा दो, शाबाश, ये नया थ्रेड आ गया, ठीक है। ये देखो बुके थ्रेड नजर आ रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ये बेटा साफ करना, मुझे होल नजर आए, शाबाश। ये दोबारा साफ करना, ये मैं प्लेन में चला गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंक्लाइन करूंगा हॉरिजेंटल, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स द आई बेटा, टुवर्ड्स द आई, ठीक है। ये मैंने इसको बैकवर्ड किया और ये इसको नीचे लेके, ये आई के नीचे है, ऊपर इधर से आपने प्रेस करना है ताकि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहे। थिन स्किन है, थिन सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो आपने महसूस करना है, पल्पेट करना है, पल्पेट मेरा बेटा करना है, ठीक है। और हम इसको ये ब्रिज ऑफ नोज तक जा सकते हैं, लेकिन थ्रेड की लेंथ वो आगे निकल जाएगी, ये देखिए, ठीक हो गया। ये मैंने डाल दिया, ओके। इसी होल से मैं और डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने डालने हो तो इसी होल से डाल दें। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रेस करूँगा, ये मुझे महसूस हो रहा है, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा ताकि वो एंकरिंग हो जाए, ठीक है, एंकरिंग हो जाए। ये मैं दोनों उंगल से इससे रख के इसको मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये थ्रेड्स अंदर आएंगे, इसमें नहीं है, ठीक है। अब जो नॉब है मैं देखूंगा, इसको अगर प्रेस करना है, प्रेस करने मुझे महसूस अगर हो तो पता चल जाता है सुपरफिशियल तो नहीं है, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड कि ये डीप है इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, और जब मैं नॉब उतार लूंगा, ठीक है, और कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है दोनों तरफ से, ठीक है बेटा। अब हम इसमें और डाल सकते हैं, इसमें अभी इतनी है कि हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा उठ के दिखा दो, शाबाश, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगर इनको डालेंगे और तो उधर जब हैंड्स ऑन करेंगे ना तो उधर डाल देंगे, ताकि एक प्रोसीजर हमने कर लिया एक पेशेंट पे, तो अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहना, तो मैं आइस के कोई और भी करना चाहेगा तो हम करवाएंगे उनको भी, ठीक है। लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूशन में जाके अपने जूनियर्स को आई थ्रेड्स में कंफर्टेबल हो गए, इंशाल्लाह ऐसे मल्टीपल वर्कशॉप होती रहेंगी। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अपने जूनियर को, ये मेरी चेन बन रही है, ये चेन ही मेरे लिए सारा कुछ है मेरा बेटा। यही काम हमने करना है, जितना हमारे पास अल्लाह पाक ने टाइम दिया, टू ट्रांसफर द नॉलेज टू द जूनियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली फ्री नहीं है, असल तो ये है, असल मेरा बेटा ये है। कहते हैं कि आखिरी वक्त हो ना तो सबसे अच्छा अमल कौन सा है,
वो है नॉलेज ट्रांसफर करना। तो ये मेरा बेटा इंशाल्लाह आप इधर हो तो अपने इंस्टीट्यूशन पे अपने जूनियर्स को ये ट्रांसफर करना। तो ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थीम है, इसको पूरा पाया तकमील तक पहुंचाना। ठीक मेरा बेटा, और तो नहीं कोई टेंशन तो नहीं हो रही? हाँ, अब हम इसको क्या गाइड करेंगे कि सीधा लेटना, जब भी 3-4 थ्रेड डाल देंगे, कोई कफ ना हो, और हल्की हल्की ना मसाज करें इस पे ना 1-2 घंटे। जब मल्टीपल डालें तो ब्रूज ना हो, अगर इन्फेक्शन हो तो विजिट करें, पेन हो तो विजिट करें, अदरवाइज जो होल है पॉलीफेक्स की ऑइंटमेंट बेटा दो, पॉलीफेक्स वो पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट लगा दो। ठीक है, तो इंशाल्लाह चिन के थ्रेड्स वहाँ बाद में डालते हैं। ठीक है, चिन के बाद में डालते हैं। ये दूसरा हम डालेंगे हेयर के लिए। हेयर के लिए एक कैंडिडेट थे इधर, डॉक्टर बिशारत साहब मुझे कह रहे थे, ठीक है, तो जो बताएगा उसके आगे माइक ले जाओ, उसको गिफ्ट मिलेगा। डॉक्टर अरुण नबी साहब हमारे पास आए हैं, माशाल्लाह गिफ्ट से भरे हुए हैं। इन्होंने थोड़ा पैसे कमाए हैं तो बड़े गिफ्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली होता है लिक्विड नाइट्रोजन का -196, जब वो कन्वर्ट होता है इनटू गैस, वो टेम्परेचर लो होके -162 रह जाता है। आप स्प्रे करो और साथ ये थ्रेड्स डालो, उससे भी पेन नहीं होती। या फिर ये वाइब्रेटर है तो साथ साथ वाइब्रेटर कॉम है बेटा, ये बड़े वाला छोटा कॉम होता है बेटा, ब्लैक कॉम होगा छोटा, इसमें है देखिए, मिल गया। ये बेटा चीजें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसे इसकी ना क्या कहते हैं इसको, हाँ मांग बनाई। ठीक है, और स्ट्रेस स्वैप से अल्कोहल से शाबाश, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। वो लोकल बेटा स्प्रे जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका कोई नहीं फायदा होता, या ब्लॉक कर लो। अगर आपने पीआरपी करना है, सम टाइम पीआरपी खुद इरिटेंट होता है, पेनफुल होता है। वही मैंने बोला कि अगर आई ब्रोज को आप पेड करोगे ना फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, एक पॉइंट आएगा कि आपको नॉच फील होगी, इसके 1 सेंटीमीटर अबव आपको सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटर, ये ट्रोक्लियर लेटरल होती है और ऑर्बिटर उधर होती है। अगर मीडियल से लेटरल जाए तो ऑपरेशन थिएटर बनता है ओटी, अगर लेटरल से मीडियल जाए तो TO2 बनता है। तो ये बेटा ये याद कर लेते हैं डायरेक्शन, वरना 1 सेंटीमीटर अबव, वहीं सिंगल प्रिक से आप दोनों को मीडियली एंड लेटरली 0.5 ml दोनों तरफ लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। जब दोनों ब्लॉक होंगी तो जो फोरहेड की हेयर लाइन है यहाँ तक हम ब्लॉक हो जाएंगे। अब आपने देखता है कि जो टेम्पोरल ब्रांच है इसकी फेशियल नर्व की, वो मैंने बोला था कि ट्रैगस से 1 सेंटीमीटर, ये आपने पल्पेट की सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, उसके आपने मीडियली वहाँ ये जो हेयर लाइन है इसके अराउंड आप रिंग ब्लॉक करोगे तो आरिकुलो टेम्पोरल ब्लॉक होगी दोनों तरफ। आरिकुलो टेम्पोरल जाएगी कहाँ तक, मिड फेस से थोड़ा सा आगे को, पीछे से हम जो मेस्टाइड प्रोसेस है उसको पल्पेट करेंगे, उसका मीडियल बॉर्डर 1.5 सेंटीमीटर मीडियल टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द मेस्टाइड प्रोसेस, वहाँ 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड लगाएंगे। तो कौन सी जाएगी, लेसर ऑक्सीपिटल, लेसर, और ऊपर नीचे करोगे तो ग्रेटर ऑक्सीपिटल भी जाएगी, उससे पूरा साथ जो है ना नम हो जाएगा। और जो ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस बोन है वहाँ कौन सी है, ऑक्सीपिटल, उसके दोनों 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स लगा देंगे तो आप इजीली पीआरपी करोगे, खुशी खुशी घर जाओगे। ये नहीं होगा कि पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन हो रही है, आपको काम करने का मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम चूंकि ये बिशारत है, मेरा दोस्त है तो YDA का अड़ी ना लगा दे,
तो मैं इसको लोकल नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बर्दाश्त करेगा ना भाई, ये बर्दाश्त करेगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई यूज माई एक्सपर्टीज, प्रे फॉर मी कि मेरे बेटे को पेन ना हो। हाँ, मेरे बेटे को प्रे, जब ऐसा बचना हो तो बेटा कहते हैं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये वाइब्रेटर हम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए हमेशा आसानी बता रखी नहीं, इंशाल्लाह होगी पेन। अगर मेरे बेटे को पेन होगी तो हम लोकल लगाएंगे, ऐसी कौन सी बात है। इसको ओपन करेंगे। हाँ, ये बिशारत के लिए हम पैकेट निकालेंगे। और ये कौन सा बेटा साइज है, ये देखो इस पे टिक मार्क लगा हुआ है, नजर आ रहा है, टिक मार्क आ रहा है। ये है 27 गेज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा इसमें देखो 27 गेज, उससे भी बरीक होते हैं 29 गेज। अब 27 गेज में 50 mm है नीडल की लेंथ है, तो 70 mm है थ्रेड की लेंथ। हम इसे बोलेंगे 50/70। तो चूंकि 27 बेटा बहुत बारीक नीडल होती है, इसलिए पेन कम होती है, ठीक है। जब आप कंप्रेस करते हो टिश्यू को विद वाइब्रेटर तो रिडक्शन ऑफ पेन अबाउट 50% हो जाती है। जो इंसुलिन की होती है उसकी गेज कितनी होती है, उसकी 30, 31, 32 तक भी अवेलेबल है। वो है, निकालिए इसमें, ये निकालिए, ठीक है। इसमें एक पैकेट में कितने हैं, 10, तो टोटल इसमें पैकेट कितने हैं बेटा, 5 का मतलब 50। जब आप परचेज करो बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू परचेज द थ्रेड है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है कि आपने जाके वैसे ही परचेज कर लेने, बाद में पड़े एक्सपायर हो जाए। तो इनको परचेज करने का एक प्रोटोकॉल होता है कि 1 पैक इज इक्वल टू 50 पीस। जब आप जा रहे हैं तो 10 पीस लिखे हों तो पैसे आपसे ज्यादा चार्ज किए हों तो वो ठीक नहीं है। पहले पेट्रोल महंगा है तो ध्यान रखना है बेटा। इसको इसमें डालेंगे, ठीक है। खोलो बेटा, शाबाश। देखो इसको खोलना नहीं आता, लेकिन शाबाश कहा। जो दोनों तरफ से शीन से शुरू होता है, शीन से खत्म होता है, दोनों तरफ शाबाश। अब इसको तिब्बत सोप गिफ्ट में देंगे, जो तेज से शुरू होता है, तेज से खत्म होता है। अब ये स्टरलाइज मैनर से मैंने निकाल लिया, ठीक है बेटा। अपनी हेयर लाइन को अभी स्टरलाइज नहीं, ये वाली वो स्टरलाइज कर लिया, अल्कोहल लगा लिया, ये पेशाब नहीं पीनी, ठीक है। हाँ, ये ना 4 to 6 मंथ में ये पीडियो है ना, ये एब्जॉर्ब होता है, डिग्रेडेबल है। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इनटू वाटर एंड CO2, तो उतनी देर में ये एज ए स्टिमुलेटर काम करता है। इससे कोई फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा नहीं बनता, ये इनर्ट मटेरियल है। पॉलीडाइऑक्सानोन, एक ऐसे थ्रेड भी आते हैं कि सिर्फ कैनुला मिलते हैं, कैनुला। तो जैसे पहले पुराने जमाने में फिरकी पे थ्रेड डले होते थे ना, जस्ट कैनुला लो और थ्रेड ले लो। वो पहले आते थे डेक्सोन या ये सिल्क। आजकल चूंकि ये इसकी जनरेशन आई है, 4th जनरेशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th जैसे एंटीबायोटिक की हैं, तो कैनुला डाल दो, उसके बाद थ्रेड डाल दो। वो थ्रेड कैनुला को निकाल लो, उससे आप टाइटनिंग इफेक्ट ले लो। वो है, यानी कि जो बंदे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप हमने परचेजिंग कैसे करनी है। जैसे आप लोग काफ़ी चाहते हैं कि परचेजिंग कैसे करनी है, तो शेख साहब को फ़ोन आते हैं, तो शेख साहब फ़ायदा ही करते हैं, बता देते हैं कैसे ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक होगा बेटा। ये कौन सा थ्रेड है, देखो बेटा, पीडियो। आगे क्या है, मोनो और स्पाइरल। एक होता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का क्या मतलब होता है, टॉर्नेडो डबल ट्विस्ट। डबल ट्विस्ट मीन जैसे वो चिप्स नहीं आती है स्टिक पे लगी होती, वो टॉर्नेडो चिप्स है ना। एक ही पोटैटो
और डबल ट्विस्टिंग से चिप्स बनी होती है, उसे टॉर्नेडो बोलते हैं। उससे ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, ज़्यादा एंजियोजेनेसिस होती है, ज़्यादा सर्कुलेशन होती है, ज़्यादा कोलेजन प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा एयर ग्रोथ होती है। तो वो भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, वो आईब्रो लिफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इसको शुरू कर दिया, एक तरफ से शुरू करूँगा। ये बेटा ये सुपरफिशियल आपको ना सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी महसूस हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा उधर है, मैं इधर डालने में आप थोड़ा सा आप इधर आए हैं, प्रॉब्लम ना हो। ये मैं इधर से डाल दूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह पेन नहीं होगी बेचारे। आपने नसी और लोकल स्टरलाइज कर लिया। ये जो कि ना नीडल है, तो नीडल को देख लेते हैं कि शार्प जो है ना वो शार्पनेस किधर है, ठीक है। ये मुझे शार्पनेस नजर आ रही है, उल्टी नहीं बेटा होनी चाहिए, ठीक है। कि शार्पनेस का जो माउथ है वो आपको शार्पनेस आपको नजर आनी चाहिए, नीडल की जो पिन है? पेन हुई बेटा? हाँ ना, ऊंची बोलो। हाँ फील हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। इसको अब हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे जाके तो ये आपकी स्पीड बनती जाएगी, अगर आगे टिश्यू में रेजिस्टेंस नहीं आएगी है। ये जो ओपनिंग है इससे हम कॉकटेल भी डाल सकते हैं और पीआरपी भी डाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम ये फ्रंटल लाइन को कवर करेंगे। सर आप मूव कब करते हैं, जब रेजिस्टेंस फील होती है आपको? नहीं बेटा, ये देखो ना, ये रेजिस्टेंस आ गई ना नीचे, ये ब्लड वेसल परफ्यूज होती है तो ब्लड वेसल आ जाती है, कोई इशू नहीं होता है। आप पीछे जाके दोबारा उसकी मूवमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। लोकल जो है ना वो दे हैं इसमें, मैं दे देता हूँ, ये साफ करें हम। ये थोड़ा सा आप आगे पीछे ट्रू फ्रू मूवमेंट देते हैं, किसी जगह पे रेजिस्टेंस आती है। अरुण भाई आए प्लीज हेल्प करें, ठीक है। इधर आए अरुण भाई, आप भी आए। ये अरुण भाई से भी डलवाते हैं 2 थ्रेड। थैंक यू सर, थैंक यू। छोड़ो सर अभी लोकल वो लोकल देंगे ना, तो ये मैं देखता हूँ, ये इंशाल्लाह पेन अब नहीं होगी। सुपर टॉपली हाँ सुपर डॉक्टर से चलिए इसके बाद दे देते हैं। सर नर्व ब्लॉक में उसका मटीरियल भी है ना तो जब उधर जाएंगे ना, ये 4 थ्रेड डाल देते हैं, फिर लोकल देके बाकी कर देते हैं। 4 और डालने हैं, ठीक है। तो वो लोकल लगा देते हैं, ठीक है। हाँ तो उसकी वजह ना कि लोकल पे फिर है ना हमें आप जो है ना देखते ठीक है, इसके मूवमेंट से सर ने है तो अच्छा आई थ्रेड। हाँ सर ठीक सर, ये मैंने पेन ही नहीं होने देनी अब, खत्म हो गए। एक रह गया आपका है बिशारत, एक रह गया। जो लो अभी बिशारत के लिए लस्सी तो पी है सर, लोकल भी पिया। लो ठीक हो गया। ये हमने 2 4 6 7 डाल दिए हैं, बाकी थ्रेड इनको लोकल लगा के, ताकि आपको पता चल गया। इसी तरह बेटा मांग बना के आपने स्किन सॉफ्ट टिश्यू में आना है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे एक एक करके, सारे भी निकाल सकते हैं, एक एक करके भी निकाल सकते हैं। ये देखो थ्रेड से है नहीं, ये स्पाइरल था है। 1 ये 2 ठीक ओके। इसी तरह मेरा बेटा हम 5 लाइनें मांग बना के पीछे को जाएंगे और 5 थ्रेड्स डाल देंगे। फिंगर से स्टेबलाइज आगे से करके फिर निकालते हैं। हाँ वरना तो थ्रेड साथ आ जाएगा ना। मैं प्रेस किया हुआ इसको, ये बेटा
ठीक है। ये इसको मूवमेंट इसलिए देते हैं कि वो एंकर हो जाए टिश्यू में जो फैट सेल्स हैं, इसलिए मैंने लेयर पूछी थी। स्कैल्प की लेयर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। स्किन दोनों में होती है। अगर कोई 3 भी बता देता ना, 3 तो कॉमन थी, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद पेरियोस्टियम, उधर स्मैश था, स्मैश का डिफरेंस था, और लूज एरिया टिश्यू इधर होते हैं, ठीक है। पेरियोस्टियम उधर भी है, पेरियोस्टियम इधर भी है, तो ये डिफरेंस था है। तो इसलिए गिफ्ट मेरा। लो बिशारत भाई, माशाल्लाह हमने डाल दिए, काम ख़त्म हो गया। दूसरी साइड पे मैं जाता हूँ, तो इंशाल्लाह लोकल लगा के ना तो हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा था, ये 2 आइज़ का और हेयर का, तो साथ आईब्रोज का भी था। ये भी पेन कर लो, तो फिर वो टाइम थोड़ी रह जाएगी, वो आईब्रोज का उधर कर लेंगे, ठीक है। या आईब्रोज कोई है? एंड गुड आफ्टरनून, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, और आई होप कि आज आप घर जाते हुए बहुत सा लर्निंग एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, जैसे कि हमारे सीनियर प्रोफेसर साहब ने, बाकी हमारे ट्रेनर्स ने, मास्टर ट्रेनर्स ने इतनी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन दी चीज़ों की। तो थ्रेड्स हम रूटीन में कर रहे हैं, फिलर्स हम रूटीन में कर रहे हैं, बोटॉक्स हम रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन ऑन डेली बेसिस आई गेट टू सी सो मैनी क्वेरीज बाय द पेशेंट्स कि हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमारे फेस में नहीं चाहिए, वी डोंट वांट फिलर्स एक्चुअली। तो उसके लिए व्हाट वी हैव कम अप विद, इट्स अ टेक्निक विद प्योर हाइलुरोनिक एसिड, जो कि स्किन बूस्टर्स हैं। और स्किन बूस्टर्स का बेसिकली काम ये होता है कि ये जो आपका नेचुरल वॉल्यूम लूज हो चुका होता है, या आपकी जो स्किन लूज हो गई होती है, ये उसको नेचुरल वे में कोलेजन इंडक्शन से और हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्शन से ये उसको लिफ्ट बैक करता है। ये ना सिर्फ आपको लिफ्टिंग देता है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो, ल्यूमिनोसिटी, आपकी एक्ने स्कार्स की करेक्शन, पोर साइज रिडक्शन, ये तमाम चीज़ें देता है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इट्स प्योरली नेचुरल, एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है। येस, अगर आप वेसल्स हिट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ब्रूजिंग और स्वेलिंग एज वेल। सो प्रोफिलो से आप सब अवेयर हैं, इट्स अ प्योर हाइलुरोनिक एसिड, 100% हाइलुरोनिक एसिड होता है, और इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 35 मिलीग्राम इसका होता है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है? कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फिलर्स एंड प्रोफिलो और एनी स्किन बूस्टर? एनीबडी? नो? ओके, अच्छा, तो स्किन बूस्टर्स में और फिलर्स में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि फिलर्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जहाँ पे हमें वॉल्यूम रीस्टोर करना है विल बी नीडिंग फिलर्स ओवर देयर, और जहाँ पे हमें सिर्फ नेचुरल लिफ्ट देना है विदाउट एडिंग आर्टिफिशियल वॉल्यूम, वहाँ पे हम स्किन बूस्टर्स ऐड करते हैं, जो कि नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है। सेकेंडली, हम सबको ये चीज़ पता है कि फिलर्स जो है 1 ml सिरिंज में आता है, वाइल स्किन बूस्टर्स कम्स इन 2 ml सिरिंज। सेकेंडली, जो हम इसकी इंजेक्शन की साइड्स हैं, फिलर्स को हम हमेशा बीनीथ द स्किन इंजेक्ट करते हैं, वाइल स्किन बूस्टर्स को हम विद इन द स्किन लेयर्स इंजेक्ट करते हैं। सो द बेस्ट थिंग, जब हम विद इन द स्किन लेयर्स में इंजेक्ट करें, वी आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द वेसल्स, अवे फ्रॉम द नर्व्स, सो देयर इज लेस चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स। सो थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। प्रोफिलो वी ऑल नो इट्स वेरी कॉस्टली, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, डिफिकल्ट टू बी अवेलेबल बिकॉज इम्पोर्ट के इशूज़ एंड ऑल दैट। देयर इज़ अ न्यू स्किन बूस्टर इन इंडिया के नाम से है ये, इट्स एन यूरोपियन स्किन बूस्टर सिमिलर टू प्रोफिलो, सेम रिजल्ट्स हैं, लेकिन बेनिफिट क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्रोफिलो। सो इन पेशेंट का हम स्किन बूस्टर करेंगे, कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है और कहाँ पे नहीं इंजेक्ट किया। पहले मैं ये बता देती हूँ कि कहाँ पे हमने इसको नहीं इंजेक्ट करना। अंडर आई एरिया, फोरहेड हम नहीं टच करेंगे, हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स ईच साइड ऑफ द फेस पे इंजेक्ट करना होता है। ऑल्सो वी कैन यूज इट ऑन नेक, डिकोलेटाज, हैंड्स एंड इवन फॉर द आर्म्स एज वेल। सो अब हम आपको थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो दे चुके हैं, थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे देते हैं। हमें इसमें किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेशेंट पेन को नहीं टॉलरेट कर पाता तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव टॉपिकल एनेस्थीसिया,
इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। मुझे डॉक्टर साहब ग्लव्स दीजिएगा प्लीज़। कैमरा किधर है? मुझे ग्लव्स पहने थे तो वहाँ पे होती है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ ये आपकी स्किन में कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड की इंडक्शन कर देता है। जब कोलेजन इंड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे एंटी एजिंग बेनिफिट्स, लिफ्टिंग बेनिफिट्स, तमाम ये चीज़ें आएंगी। एंड वी ऑल नो कि हाइलुरोनिक एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि ये वाटर रिटेन करता है। तो जब वाटर रिटेन होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ग्लो, प्लम्पीनेस, सपलनेस आपको ऑब्वियसली ये नज़र आएगी। इसका डाउन टाइम नहीं है कोई, ऐसा स्लाइड बम्प्स इसके ऊपर विजिबल होते हैं जिसको हम मसाज करके उसी वक्त डिसअपीयर कर देते हैं। ओके सो थोड़ा सा इसकी मार्किंग्स के बारे में बता लूँ। जब हम रूटीन में कर रहे हैं तो फिर हमें स्केल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा फेस ऐसे कीजिएगा प्लीज़। आपको कैमरा इस साइड का दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, 1 centimeter away from the tragus area, mandibular angle 1 centimeter away, palpate the angle and then 1 centimeter straight कीजिएगा। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। ईजीएस्ट इज जस्ट नेजल बेस के ऊपर आप जाएं और 1 सेंटीमीटर आप इसको कर लें मार्क। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू कि आपकी जो मिड प्यूपिलरी लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, इट कैन बी वन ऑफ यू पॉइंटेड विद। फॉर चिन एरिया हम पहले तो चिन को 2 एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट। आउटर कॉर्नर से हम 1 सेंटीमीटर बिलो जाएंगे एंड 1 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर इनवर्ड्स। So these are our 5 points for the face. Same हम दूसरी साइड के ऊपर ये करते हैं 5 points. अच्छा, जो प्योर हाइलुरोनिक एसिड होता है इट ऑलवेज स्टिंग्स। आपको नीडल का पेन नहीं होता, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड जब हम इंजेक्ट करते हैं इट ऑलवेज गिव यू स्टिंगिंग फीलिंग। सो दिस इज प्रीटी नॉर्मल। इसके साथ ये जो 2 ml सिरिंज है, इट कम्स विद 2 नीडल्स जो इसके साथ आती हैं। व्हाट नॉर्मली आई डू, एक साइड फेस पे इंजेक्ट करने के बाद आई ऑलवेज चेंज माई नीडल बिकॉज मल्टीपल प्रिक से नीडल आपकी ब्लंट हो जाती है जो पेशेंट को पेन कॉज करती है। और जब भी कोई आप इंजेक्टेबल यूज़ करें, सबसे पहले चेक इट्स फ्लो। आप हमेशा उसका फ्लो देखें कि आपको कितना प्रेशर प्लंजर के ऊपर रिक्वायर्ड है। सो इसका फ्लो जो है यू कैन सी कि हमें बड़ा स्मूथली ये बाहर आ रहा है। ओके, सो आई एम अ लिटिल जर्मोफोबिक, तो हम पहले सारा क्लियर कर लेते हैं। अदर देन द स्पॉट्स के हमारे बाकी एरिया क्लियर हैं। अब 1 by 1 हम ये क्लियर करते जाएंगे। थोड़ा सा फेस ऐसे कीजिएगा। इट्स अ 2 ml सिरिंज और हर पॉइंट के ऊपर हम 2 यूनिट्स इंजेक्ट करेंगे। सेम गोज फॉर द नेक, 5 पॉइंट्स ऑन दिस साइड एंड 5 पॉइंट्स ऑफ दैट साइड। डिकोलेटाज के लिए भी 10 पॉइंट्स होते हैं एंड सेम गोज फॉर द हैंड्स, 5 and 5 ईच साइड। हाँ, ये कीजिएगा। ओके, सो विल गो इन, बेवल डाउन। अच्छा, जब हम नीडल लिफ्ट करते हैं तो इट कीप्स अस अवे फ्रॉम द वेसल इवन इफ वी हैव हिट द वेसल। और एस्पिरेशन इज द रूल। आप कुछ भी कर रहे हैं, फिलर कर रहे हैं, आप स्किन बूस्टर कर रहे हैं, फैट डिसॉल्विंग, ऑलवेज एस्पिरेट बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट।
So 3, 2, 1, I'm gonna inject 2 points. आपको हल्का सा ये चुभेगा. There you go. No bleeding, क्योंकि हम वेसल में नहीं गए हैं. बट ये जो स्वेलिंग सी आपको नजर आ रही है, जो नोड्यूल है, इसको हम आफ्टर द प्रोसीजर सारा डिसॉल्व करके अपने पेशेंट को भेजेंगे. हम 5 पॉइंट्स क्यों सिलेक्ट करते हैं, शायद किसी के माइंड में क्वेश्चन आया हो. हम 5 पॉइंट्स की रीज़न ये है कि ये हमारे मैक्सिमम डिफ्यूजन एरियाज देता है. जब हमारा ओवरऑल एरिया डिफ्यूज होगा और सारे एरिया के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड स्प्रेड करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे फुल फेस के ऊपर उसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली नजर आते हैं. एक नया अल्कोहल स्वाब करने and you can see how comfortable my patient is और हमने कोई anesthesia भी नहीं दिया है. 3, 2, 1, we are in. अगर कोई question है आपका तो you guys can ask me. I can reply while giving the training as well. That's it. स्ट्रेट कीजिएगा फेस. अगर हम टू डीप चले जाए इसमें, जस्ट लाइक फिलर, अगर हम बीनीथ द स्किन चले जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है इट विल बी वेस्ट. सो वी हैव टू बी विद इन द स्किन ताकि हमारा तमाम जो प्रोडक्ट है हमारे स्किन की प्रॉपर लेयर्स के अंदर डिस्पर्स हो. सो यहाँ पे आपको स्टिंग करेगा ज़्यादा. Okay, so one side is done. I'm going to switch to the other side. अच्छा, अब इस तरफ कीजिएगा प्लीज प्लीज. स्किन बूस्टर्स को मेनली हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं. वन इज़ बायो रिवाइटलाइजर एंड अदर इज़ मीजोथेरेपी. जो बायो रिवाइटलाइजर्स हैं, दिस इज़ बेसिकली बायो रिवाइटलाइजर. बायो रिवाइटलाइजर्स प्योर 100% हाइलुरोनिक एसिड्स होते हैं, while मीजोथेरेपी इज़ अ कॉकटेल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन्स, इम्यूनो एसिड्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. सो इनके इंजेक्शन पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. अदरवाइज दोनों के रिजल्ट्स आपको स्किन ग्लो, स्किन लिफ्टिंग, टेक्सचर इम्प्रूवमेंट, इन तमाम चीज़ों में मिलते हैं.
we get maximum results with the minimum number of pricks. जब हम skin boosters करते हैं, while in mesotherapy we have to inject on certain areas जो कि 24 different points होते हैं जो face पे inject करते हैं. When can we see the results? After 2 weeks. Always tell your patients कि आपको 2 हफ्ते के बाद results इसके visible आना शुरू हो जाएंगे, and after 1 month we repeat the session and only 2 sessions are needed. इसके लिए जो maintenance sessions दिए जाते हैं, we normally call our patients after 6 to 9 months. तो इसके साथ स्किन केयर आप हमेशा ऐसी ऐड करें जो क्लाइंट को नेचुरल कोलेजन इंडक्शन की तरफ रखे. वेरी ब्रेव लेडी, लास्ट पॉइंट है हमारा ये. थोड़ा सा स्टिंग यहाँ पे ज्यादा करता है. That's it. अच्छा, अब ये तमाम जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स. या तो हम पेशेंट को बताते हैं कि विद इन 24 आवर्स ये सेटल डाउन हो जाते हैं. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, जस्ट गिव इट अ लिटिल मसाज एंड दे विल डिसअपीयर. देयर इज नो डाउन टाइम, नो ब्रूजिंग, नो स्वेलिंग, नो टेंडरनेस. वेरी इजी प्रोसीजर. हार्डली 15 minutes it takes and then you're good to go. एक्सीलेंट डॉक्टर सनिया, माशाल्लाह. आवाज़ आ रही इसमें? एक्सीलेंट से बेहतर लफ्ज़ क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. परफेक्ट से बेहतर क्या है? कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, मेक्स मैन परफेक्ट. ये जो मैम ने क्या किया, प्रोफाइलो बूस्टिंग इफेक्ट ऑन द फेस. तो 5 इसे बोलते हैं बाप. क्या कहते हैं? बाप. बायो एस्थेटिक पॉइंट्स. ये 5 बायो एस्थेटिक पॉइंट्स होते हैं. ये अनक्रॉस्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है, क्रॉस्ड नहीं होता. अगर क्रॉस्ड हो तो एक मॉलिक्यूल का नाम है BD 84 पढ़ते थे ना एनाटॉमी में, तो BDDE, बुटेनिडोल डाइग्लाइसिडिल ईथर, BDDE. अगर वो हो तो ये क्रॉस्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है. जो क्रॉस्ड होता है वो डीप जाते हैं जब स्किन एजिंग में सिंकिंग में हो नीचे क्लोज टू द पेरियोस्टियम, ताकि ड्रिबलिंग ना हो जाए. तो जो अनक्रॉस्ड है वो मीजो में आता है. मीजो मीन जैसे मैडम ने नीडल से वो वही पिंच एनाटॉमी नीडल से की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन उसको सक करना कि कहीं ब्लड वेसल में तो नहीं है. तो वो कहते हैं गोरे कि 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये थिक मटेरियल है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. अगर ब्लड वेसल में है इट विल टेक सम टाइम टू कम द ब्लड इनटू द सिरिंज. आर सेफ. 5 bioaesthetic points for uncrossed hyaluronic acid to take good boosting effect. अब इसमें थोड़ी सी मैम से 32 मिलीग्राम पर ml है, इसमें 35 नहीं है, 32 फर्क कोई नहीं है. 32 मिलीग्राम पर ml uncrossed hyaluronic acid, ये अबाउट 25 to 30,000 में आता है. क्यों मैम ऐसे ही है ना? 30 to 32 था. हाँ, ये मैम ने माशाल्लाह हमें डोनेशन दी. ये डोनेशन में मैम ने अपनी पॉकेट से लगाया, तो हर चीज़ माशाल्लाह फ्री में हो सकती है. और बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा लगाया, मुझे बड़ा मज़ा आया.
इसी तरह कराची में लोगों ने अपने पास से चीज़ें लाएँ। अभी डॉक्टर आतिफ शहजाद साहब बैठे हैं, उनका बैग भी थ्रेड से भरा हुआ है, वो उन्होंने भी अपने पास से डोनेशन में लगाने हैं। तो बेटा ये चीज़ें सब हो सकती हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा माशाल्लाह क्राउड, डर्माटोलॉजिस्ट, कूल काम क्वाइट स्पेस, मैडम नीला और माशाल्लाह कदूस भट्ट साहब, जनरल साहब ने हमें रौनक बख्शी। ये माशाल्लाह वर्थ रिमेंबरिंग है। जैसे मुझे 2005 की चीज़ याद थी, ये फॉर होल लाइफ दे आर सेटल्ड इन माई हार्ट, in my right ventricle or left ventricle, in fourth ventricle. Sir, in all your ventricles, mashallah, sir. Sir, thank you very much for your, really I am very happy कि आपने हमें, और ये मेरे जूनियर, ये मेरी माशाल्लाह डॉक्टर सनिया सर्विसेज में मेरी स्टूडेंट थी जब मैं इनको मेथड करवा रहा था, उसी वक्त मैंने असेस कर लिया था माशाल्लाह। और ये आप लोगों का बेटा टाइम है, आपने स्टेज पे आना है, आपने सीखना है, आपने जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। कौन सी जनरेशन? स्किल्ड जनरेशन जो कि ह्यूमैनिटी को फ़ायदा दे। तो दूसरा एक और आपका मैं फ़ायदा करता हूँ, एक डर्माकोल का आता है, उसमें 5 ml है। ये कितना था बेटा? ये 2 ml। 2 ml बेटा, वो किधर है? DQHA, वो भी अनक्रॉस्ड है, उसमें 24 बायो एस्थेटिक पॉइंट्स हैं, BAP बाप कह देते हैं। तो ये जो मैम ने लगाए, ये जो जाइगोमेटिक बोन होगी 1 सेंटीमीटर ट्रेगस के आगे हो गया, ये जॉ लाइन होगी, नो नेजल के हो गया, या ऊपर से एंगल बना लें और चिन पे 2 साइड्स बना लें, तो 2 ml इसमें यूज़ हुआ। अब ये इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, तो जो ओपन पोर्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, बूस्टिंग इफेक्ट, डीप मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, तो माशाल्लाह वेरी एक्सीलेंट, इसे बोलते हैं परफेक्ट। अब इससे आगे अनलिमिटेड थैंक्स टू डॉक्टर सनिया। थैंक यू सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। ये पता अगर है तो बता दें। Thank you very much, sir, for the very, and Dr. Sania, thank you. Now we will proceed further. I will request our chief guest, General Zafar Sheikh, to please come, sir, on stage and give your worthy comments about this workshop. General Zafar. I request General Zafar to please be here. We would be giving small gifts on behalf of Lahore General Hospital to our... Sir, please come on stage. I would invite Professor Neil Asker. Please come on stage. So this is a token of our love and gratitude. We are humbled that all of you, a galaxy of dermatologists, have honored us by being here and making this. Dr. Kekisha, please come on stage. Dr. Madiha. Dr. Tahir Kamal. Sir, thank you very much. We are honored for your presence here, and I express my extreme gratitude. Okay, please bring the gift for Dr. General Zafar. बन के अलमारियों की जीनत बन जाती, कोई ऐसी चीज सर को दें जो सर के काम आए। And now I would request Dr. Shahid Sheikh. Sir, please. सर, हमने भी आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। ये सरप्राइज था सर आपके लिए। And then Dr. Abdul Qudus Bhatt. दोनों क्या? Then our very kind teacher and trainer, Dr. Tahir Kamal. Sir, please receive your gift.
My teacher, my supervisor, Dr. Atif Shahzad, sir, please receive your gift. Dr. Keke Shantahir, she's already on stage. I would request her to please receive her gift. Dr. Wajiha Saeed. Thank you, madam, for honoring us and coming all the way from your hospital. Dr. Ashpa Chima. Dr. Ashpa, I am always very proud to see you. She is a budding aesthetic physician, very vibrant. Dr. Sania Javed. सर ने कहा था एक्सीलेंट से आगे क्या है, एक्सीलेंट से आगे है मार्वलस. डॉक्टर सानिया जावेद. डॉक्टर नबीला चीमा, मैडम, we are really honored you're here from Gujranwala on the way. Thank you very much. Dr. Momina Zahir. And last but not the least, Dr. Ghazala Bhatt, she's also my teacher. Madam, thank you very much for honoring. Now I would request all the trainers and the trainees to please assemble around the stage for a group photo. Dr. Uzma Sarwar, Dr. Uzma Ehsan. Madam, Professor Dr. Uzma Ehsan, she is a professor serving at Sharif Medical City Dermatology Department. Madam, thank you very much for honoring this occasion. You are welcome, madam, welcome. Please, all the trainers and the trainees, please, all the participants assemble around the stage for a group photo. After the group photo, we will be having a break for lunch and break. Excuse me, madam, please थोड़ा सा. Excuse me, ma'am. कोई बात नहीं, जहाँ तक हो जाएगा Excuse me, मैडम प्लीज थोड़ा सा. सिर्फ 8 लोग हैं जो स्टेशन पे हैं. डॉक्टर सदफ अफजल हैं और डॉक्टर ज़ैद अहमद हैं, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर गुलाम, डॉक्टर आयमा शाहीन और अफशा अहमद और डॉक्टर इनकी लिस्ट को
सॉरी, ये नजर आ रहा है उधर? कर रहे हैं अभी कॉल वाले अच्छा, इसमें ज़ाइलोपेन अकेले जी, ज़ाइलोपेन अकेले ज़्यादा बेहतर मोबाइल पार्ट होते हैं और एक मोबाइल पार्ट होते हैं, ठीक है। आप ये जो मोबाइल पार्ट है ना उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो जो मोबाइल पार्ट हमारा फिक्सेशन पॉइंट है, एंट्री पॉइंट वगैरह से वहाँ पे लोकल एरिया ताकि पेशेंट को डालें। ये कितने सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर्स नहीं है, ये आपने सभी से लाइन ये ना रिंग से बाहर है, ये जो से बाहर है। सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच आती थी ना ऐसे आके यहाँ पे वो ब्रांचेस Excuse me, madam, please. स्लाइड से जो आपका लेटर है स्ट्रेट Excuse me, madam, recording हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, प्लीज। हिना कंसेंट फॉर्म किए, कंसेंट फॉर्म जितना सके अभी लोकल लगाए सिर्फ उतना ही आप थ्रेड डाल सकते हैं डाल के जाते हैं बहुत लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं जैसे सेशन लेकिन वो अगर ब्लैक ताकि पेशेंट के लिए ये लोकल ये मैम लाइट बंद हो गई ना, प्रॉब्लम लेते हैं कोई समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ पहले से आप यहाँ से रास्ता यहाँ से जो फोन मैंने एक्सटर्नल पेंट डाली कौन से निकली एक्सटर्नल पेंट जैसे ही कौन से निकली वो सुपरफिशियल हो जाती है 37 मिलीमीटर के बाद इंटेंस सुपरफिशियल एंड गिव्स ब्रांचेस यहाँ पे इसकी पेराइटल ब्रांच आ जाती है ये लाइन से सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रांसवर्स तो आपने आपके पास सेफ साइड है पास हेयर लाइन के पास को एरोड नहीं करे, ठीक है। दूसरा एक फेशियल की पार्ट ब्रांचेस आपको पता है यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक फिर बंकर फिर मैंडिबुलर और फिर नीचे लेकिन फेशियल का बहुत डीप होता है, ठीक है। डीप जाना ही नहीं है अपने का स्पैस बहुत नीचे आता है उसको भी स्वेलिंग समटाइम्स थोड़ी सी एक आपको एक रेडनेस वो आएगी ठीक हो जाएगी वो दर्द है इसका मतलब ये है कि जो एंट्री पॉइंट में समटाइम जो सेंसरी टर्म्स है वो तो बहुत डैमेज हो जाता है या बाग आप जब बाग सेंसरी टर्म्स के साथ डैमेज करती है तो वो भी आपको पेशेंट को श्योर करा देना कि वो दिन फिक्स
एस्थेटिक प्रोसीजर्स वर्बल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि थ्रू द पेशेंट अपने पेशेंट को बहुत चीज़ें कराते रहेंगे आपकी मैनेजमेंट कौन है यहाँ पे वो ये चीज़ करेक्ट मैनेज देखिए प्लीज जिनके हैंड्स ऑन पे यहाँ पे नाम है सिर्फ वो लोग आगे रहे प्लीज रेड वाले डॉक्टर साहब आगे आ जाए ये आप जरा देखते जाइए इसलिए ये आप रिवर्स आते जा रहे आठ लोग ठीक है अच्छा ये 1 by 1 कराना है सर ने ना तो एक एक करके आप लोगों ने अंदर आना है सबसे इकट्ठे नहीं खड़े होंगे सिर्फ ग्रुप वाले खड़े हैं बाकी लोग प्लीज मूव आउट कर जाए जिनका ग्रुप में नाम है सिर्फ वो लोग यहाँ खड़े होंगे काइंडली आई नीड यू कोऑपरेशन एसएमडी पे सब नजर आ रहे हैं अभी सर को माइक भी दे देते हैं ताकि आप सुन भी सकें सर को माइक भी दे दीजिए काइंडली जिनके नाम नहीं है वो मूव आउट कर जाए वरना फिर मैं लिस्ट ला के चेक करूंगी आई डोंट वांट टू डू दैट अच्छी बात नहीं है ना दे आर ऑल एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब प्लीज मैडम थोड़ा सा प्लीज बैक पे आ जाएं कहाँ तक हम कर सकें क्योंकि हमारे कैमरा जो लेंस थी वो कम थी दो चार पॉइंट ऐसे तक रजिस्टर्ड है ठीक है सो वी वांट टू लिफ्ट द जाओ ठीक है अब हमने जो एंट्री पॉइंट देखा है ठीक है एंट्री पॉइंट से लेकर किया है which is एक लाइन ड्रॉ की है लेटरल कैंटस ऑफ द आई से बिल्कुल से वर्टिकल इसके ऊपर है सर ने एक एंट्री पॉइंट क्रिएट किया है उसके बाद से इसमें लोकल आप कैमरे में दोनों से एक बंदा खड़ा हो जाए लाइट को चलानी बेटा आप उधर चीज़ों के साथ आओ अक्षा आप बोलो बेटा आप एक कप जी जी वन बाय वन करना चाहिए ना वन बाय वन ये डॉक्टर नीलोफर है इनका नाम सबसे नीचे है नीलोफर मैडम प्लीज आप आ जाए पहले ये जो पहले वाले हैं आपके पहले दो लोग इधर तो आएंगे मैडम थैंक यू मैडम फॉर योर लोकल सबको आ ही गया है अब तकरीबन लोकल अब सबको आ ही गया मैम अभी क्या इसके बाद ये आपका ही होगा बारी बारी बुला के आपसे डलवाएंगे हाथों से आपसे डलवाएंगे तो आप खुद डालेंगे आज होल बना के ठीक है इसमें तो वो आपका जो कैनला है उससे बड़े साइज का होगा वो इजीली आ सकता है इनका चल रहा है चलो पहले ले लें
अगर आप टेस्ट के लिए नीचे कर दो राशि थोड़ा माइक को और जब भी आपने पेशेंट को माइक दे दिया दोनों साइड्स पे मार्किंग कर लेनी है और इक्वल मार्किंग करनी है और सिमुलेशन टेस्ट एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज लाइव जा रहा है पीछे थोड़ा सा प्लीज। जैसे अब आपको ये चाहिए ये भी चाहिए आप दोनों साइड से इस तरह से सिमुलेशन टेस्ट किया और पेशेंट को मैंने दिखाया कि आपको ये चाहिए आपको ये चाहिए आप मतलब प्लस पेशेंट को आपने पेशेंट को पूछना है कि आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप आगे आना चाहिए सिमुलेशन टेस्ट करना इक्वल मार्किंग अभी देखो कैसे आपने इसके साथ में डाल अच्छा डिफरेंट टाइप्स का जैसे इसमें तो जो है ना सेल्स कई होते हैं कि सिर्फ आपने पूरा कैरेक्टर डाला पूरा कंप्लीट कर लिया कुछ नीडल के छोड़ के कुछ कैरेक्टर का एक दो पॉइंट्स थे कि हर एक का डिफरेंट होता है लेकिन यूजुअली we usually abort the procedure just before the stay of nasolabial fluid, ठीक है, ताकि वो एक tenderness insertion के दरमियान आ जाए. One, second, usually you abort the procedure just one finger rest above this mandible, उसकी ये और one or two fingers away from the oral commission. उसका रीज़न ये है कि जब हम थ्रेड डालते हैं तो sometimes पेशेंट आके कहते हैं जी जब हम मैस्टिकेशन करते हैं च्यू करते हैं तो हमें दर्द होती है वो थ्रेड उनको फील होता है या चुभता है. So this is the only reason कि यहाँ से थोड़ा सा साइड में इधर से one finger ऊपर और इसके नीचे. इसको सेव कीजिएगा
क्वेश्चन था कि किस तरह पता चलेगा कि सब सिर्फ वो जो आपका वाइट कलर का था दैट इज द रेफरेंस कोड जैसे आपने डाला उसका मतलब है कि सब फिर आप जस्ट इसका भी जैसे मैंने आपको बताया था 2 fingers from here and 1 finger from there आप have to go on the procedure जो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी यहाँ से आपने इस डायरेक्शन में और थर्ड आपके अगर आपने दिस इज ऑइलर फेशियल यहाँ पे आपने just one finger from the dress और yeah ठीक है so यहाँ से आपने just यहाँ पे this is for minute ये आपके जाने के लिए और ये आपके रेज्यूमे ये तो हो गया आपके PCL और PTO कॉम्प्स आप आ जाते हैं मोल्डर्स का बस मैं बता दूँ मोल्डर्स आर शॉर्ट ड्रेस दे आर सो इजी और ये डबल कर रहे हैं इसमें आपको डिपेंड करता है कि आप फेस पर हर जगह पे मोल्डर्स ये डाल सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं समटाइम्स अगर आपने वहाँ पे फॉलोइंग ले लिया तो एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके बाद मैडम प्लीज मैडम लाइट जा रहा है पीछे थोड़ा सा जरा इनको भी कीजिएगा थोड़ा इनको भी थोड़ा
इस चीज को अगर आपको यूज करना रेगुलेट हो तो आपको पहला से करना है एक ही फिर आप छोटा है सारे इसका नीचे से ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप एक फ्रेश यहाँ से 3 या 4 शेड्स ऐसे और ये इस तरह से ये मैच डाल दिया तो ये आईब्रो आप इस तरह से इसी तरह से ठीक है। टाइम सर बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ये चैनल है यहाँ से जो एक छोटी की रखते हैं इसके लिए हम यहाँ पे बताओ तो सकते हैं सर यहाँ पे यूजुअली लाइट नहीं जाती यूजुअली यहाँ पर एक लाइन रह जाती है फिलर के लिए ऐसे वाले सब्सिडी कैसे करनी है लेकिन हम ये थ्रेड्स ही डाल रहे हैं व्हाई नॉट वी कैन प्लेस थ्रेड्स व्हाई ऑलवेज अपसेट यहाँ भी तो मेरा मतलब अगर आप यहाँ पे यूज किए अगर एक थ्रेड डालते हैं या बिजली वाले मुश्किल हो क्या हुआ नहीं लेकिन मेरा मतलब आई जस्ट डिड इट कि मैंने ये वाला भी डाला और यहाँ भी थ्रेड डाला वो उससे ये शायद ये वजह थी ये थी वो स्ट्रेच हो गया यूँ स्ट्रेच हो गया लाइट फिलर क्योंकि सेफ नहीं है ना यहाँ इसलिए हाँ वो इतना मैटर नहीं करता लेकिन यूजली क्योंकि हमने लिफ्ट ऊपर देनी है इसलिए जिस डायरेक्शन में आपने लिफ्ट देनी है ना इधर से हमने लिफ्ट देंगे तो वी शुड गो हियर ठीक है। यहाँ से आपने लिफ्ट इस चीज़ को देनी है आप इस तरफ जिस डायरेक्शन अगर तो वो आपका एक मैंने मैचिंग आ रहा है वो भी देखिए जब आप कर रहे हो तो सारे स्ट्रेट्स
वीडियो मोनो थ्रेड्स सर इसके पॉइंट्स इसकी डायरेक्शन क्या होती है इधर से इसके लिए अब रिजोलेबल फोल्ड इवन आपकी जो रोज फीटेड skin यहाँ पे बेस्ट you can play with the threads anywhere as far as आपका हाथ है ये आपस में टकराते हैं गाइड ताकि वो ज़रा स्ट्रॉन्ग ये क्वेश्चन है इसके अंदर आप कैसे मतलब पैरेलल मतलब हर तरीके के बहुत सारे तरीके कौन सा अच्छा एरिया होगा इक्वल लेंथ के थ्रेड्स एक बिग और एक स्मॉल मैंने भी किया हुआ है बहुत अच्छे से ये जैसे ये बड़े लॉन्ग का शोल्डर उसका बेसिकली तो अपने मैश ही बनाना है ना तो लॉन्ग और शोल्डर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वो मैंने किया बहुत अच्छे There's a patient मैं कुछ लोग कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना मैंने महसूस करना नहीं किया लेकिन ये कि एक सेशन मुझे पेशेंट नहीं आ सकती कहते अगर कोई नर्व क्रॉस करे
हाँ जैविक की कट के ना ग्लव्स पहने ना सकते और किसी को चाहिए मैंने सारे पीडी और केला करें क्या सही है नहीं ये हम बेसिकली ये वॉल्यूम के लिए नेज़ो लेवल के लिए तो SCI एक फिर इधर ठीक है ये जो लेवल है इसके लिए आपका जो यहाँ से आपने इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन हाँ मैं भी एक साथ बहुत ज़्यादा हमेशा जहाँ भी डालो सीजर चाहिए चलो बाद में कर लेंगे नेक्स्ट और हैंड्स-ऑन वाला सीजर मिल सकती है वो कह रहे हैं अंदर से सीजर डॉक्टर सनम या डॉक्टर फरहाना से पूछिए
जी शुगर थ्रेड्स आपकी वजह से सारे पीछे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी वजह से सारे पीछे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है अब ठीक है अब ठीक है ठीक है सारे देख रहे हैं लाइव शो। अभी क्लियर है ना अगर बहुत इसका मतलब ठीक है ना जब हम थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस आता है उसमें इसमें आपको बहुत आराम से डॉक्टर साहब इसमें पीछे थोड़ा टॉर्च है सर बिल्कुल सरफेस पे मैम नेक्स्ट इधर आई को डाल दो ये वाला सेट का जो है ना इस पे गया है अब आपने इस पे डाला है ना सर इस पे आ ये जब भी प्रोसीजर करना हो स्पीड में 25 अलग अलग ये शायद सर सबसे बड़ा ये में भी सबसे बड़ा है इससे दो साइज ग्लव्स पे
तीन लोगों ने कर लिया। तीन लोगों ने कर लिया। तीन लोगों ने कर लिया। उनका नाम मार्क कर दो, उनका हो गया। तो ज़ीरो डॉक्टर हिना ने कर लिया है, आप कर लें। एक और नहीं किया, उनका नाम कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगी आराम से, लेकिन मेरा है चाहिए। मुझे बता देना, उससे पहले मैं ग्लव्स पहन लूँगी ना, जब तक मैं थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। देखो बिल्कुल नहीं इशारे रहने के ऊपर रखना मसीज नजर आता है, लेकिन अभी एक आपने आजा आजा शाम अच्छा टाइम आइस के आप कर रहे हैं, दूसरा फाइट कर रहे सबसे सीनियर डॉक्टर है, आपको क्या पता इनसे तो हम सीखते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होगा ब्लूज इंशाल्लाह। आपसे आपको यहाँ पे इतना ज़बरदस्त है ना, आई थी सारे डॉक्टर्स फिर हो गया। इसमें लोकल की ज़रूरत ही है, अगर लोकल लाइन अपनी किन का हो गया यहाँ पे तीन एक डॉक्टर हिना का डॉक्टर जी दो लोग आते हैं इधर से बेटा उधर देख लो आप लोग यहाँ सिर्फ हैंड्स ऑन वाले हैं, आप आ जाइए हैंड्स ऑन है, कैमरे में तीन हो गए, तीनों का होगा, बाकी तीन कौन से हैं? बाकी चार कौन से? तीन हो गया तो बाकी पाँच। मैडम मैं कौन रहता है? बाकी में क्यों जो खड़ी हुई है कुछ आप दोनों को रहता है ईमा चार और इनका क्या नाम है? आप भी रहती हैं महीन का जी मैम काट के सेकेंड नंबर महीन फाइला में तुम कभी
तीन का 2 3 4 4 5 आप पाँचों का रहता है ना आपका भी डॉक्टर साहब रहता है 2 3 4 5 आप लोग ठीक है बेटा आप लोग थोड़ा पीछे ठीक है बाकी वो जिनका आप लोगों ने कर लिए तो आप पीछे से देख सकते हो उधर जाके आप स्टॉप कर वैसे भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं ट्रैक लेकिन सर इधर की क्या कैसे लेकिन सर अंडर बस इतना दम से आप बाहर निकल सकते हैं, दम से आप नीचे भी जा सकते हैं, दम से आप कर सकती हैं। वैसे जो बुके वाले आप नीचे बोल रहे हैं, नीचे नहीं कर जैसे वहाँ आप लोग एक कैरेक्टर से ये मल्टीपल से ही कुछ एक 5-6 डलते हैं मिनिमम है 7-2 साल रहते हैं जो लाइव वीडियो स्टार्ट उसका मैश निकाल के मैश में आगे पूछने की कौन कितने कैंडिडेट्स लगे कितने हो गए मैडम कहाँ पे मैंने कहा 3 लोग मैडम की तरफ पता नहीं कहाँ गए नहीं थे सामने लगाया इधर पे लोकल लगाया पता नहीं और ये लोकल लगाना तो आप स्टाफ है स्टाफ सारे कम से कम
उसके बाद लाइट्स के अंदर है और ट्राई टू सर्च द लाइट और ये वाले देख लो अब आप बताएं चॉइस अब आपने ज़्यादा लोकल लगाना तो मैच बना लेना आपका नाम क्या है? अपनी तरफ जस्ट के अंदर देखिए आपने कभी हैंड ऑन कर लिया एक ही जैसे
जस्ट फॉर जैसे वो एक आपको एडवांस थोड़ा सा हल्का से ऐसे हाथ से हल्का सा ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा करें कोई हर्ज आपको बहुत अच्छा लगा ये वो दे दे मेरे फ्रेंड्स और चाहिए एपी जर्पस में होगा तो वो पिंच होगी स्किन आपकी ना खुद ही ऊपर से स्टीफन या पॉइंट से बनेगी अगर बहुत ज़्यादा स्लो और मसल में भी हो जाएगी वैसे नहीं होगी एक आधा लगेगा पुश करना सर ये अब आप हेलो सर वो बाहर सामने बैठे हैं में डाला अच्छा जो जिम के लिए वो ये नीचे रखा है यहाँ पे अब ये पेशेंट यही करते हैं कुछ लोग होते हैं उनका बिल्कुल हल्का अंदर किया होता है तो अगर तो या वॉल्यूम हो सकती है मुश्किल भी नहीं दो चीज़ें उसकी भी कम वॉल्यूम ज़्यादा ठीक है मोडो की लेकिन जो टॉप है उसकी लिफ्ट ज़्यादा है और वो
सिमुलेशन इनका हमने ये चीज़ वी हैव टू डू दिस चीज़ें कि हमें किसी डायरेक्शन में किस तरह जाए आप मुझे लेके नहीं लेकिन जो बाकी भी लाए हैं वो जिसने बुलाए हैं उसको पता होना बहुत सारे लोग हैं ना किसी जाए हैं बाकी तो एंजॉय करेंगे आप मैं बता नहीं सकती सबसे क्या बड़ी मैं टेंशन ही नहीं ये उसके डब्बे पे लिखा होगा आई डोंट नो डॉक्टर शायद आप दोनों में से जो कोई भी आ जाए Thank you very much. नेक्स्ट पेशेंट जी जी नेक्स्ट पेशेंट
इस लाइन में ऑप्शन हो गया कि इससे हमारी एक डॉक्टर साहब आपका साथ पूरा आ रहा है पीछे सब उसके लिए सर कौन से अक्षर डाल रहे हैं यहाँ पे? जी इनको बोलें कि पूरा इनका शोल्डर आ रहा है पीछे मैम आपका शोल्डर आ रहा है पीछे किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा ये बहुत ये तो इसलिए ना हमने देखा है कि ये हमारा जो है ना सारे इन मोबाइल वाले हैं और मोबाइल वाले इसी पे थ्रेड का मेन पर्पस है ठीक है हमने इन मोबाइल वाले को देख के हमने भी किए सबसे